बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। Hello and welcome viewers. You're watching this special edition of Sunset TV. Abrogation of Article 370 has brought unprecedented era of peace and prosperity in Jammu and Kashmir. In this edition, we have packed everything for you, from Supreme Court's verdict on Article 370 to Prime Minister's message, from Home Minister's assertion in Parliament to improve security situation in Jammu and Kashmir. So come along. In a landmark verdict, the Supreme Court unanimously upheld the Centre's August 5th, 2019 decision to abrogate provisions of Article 370, asserting that Jammu and Kashmir possesses no unique internal sovereignty compared to other Indian states. The Apex Court reasoned that Article 370 was only a temporary provision to ease the accession of the then princely state to the Union at a time of internal strife and war. The verdict from a 5-judge constitution bench led by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, comes in response to a slew of petitions challenging the Centre's move 4 years ago. After a 16-day long hearing, the Supreme Court had reserved the judgment. सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से। आज मुझे आनंद है, कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिनने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रदान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। Prime Minister Modi termed the Supreme Court's verdict on the abrogation of Article 370 as historic. He said that the verdict is a resounding declaration of hope, progress, unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. On the same day, Home Minister Amit Shah replied to the discussion on Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 in the Rajya Sabha. Replying to the discussion on the bills, Home Minister Amit Shah said that this day will be marked in golden letters in the history of Jammu and Kashmir and India when the Supreme Court upheld the intention and process of decision taken by Prime Minister Modi to abrogate Article 370 in reorganization of Jammu and Kashmir as constitutional. पहले जो 7 सीटें थी एससी की, उसको हमने बरकरार रखा और एसटी की सीट 0 थी, क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है, 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। Home Minister said that terrorism in Jammu and Kashmir began in 1989 and reached its peak, resulting in thousands of displaced people, especially Kashmiri Pandits and Sikhs, rendered destitute in their own country. He said that the entire country embraced these displaced Kashmiris. He also said that 46,631 families were displaced from Kashmir, and due to various efforts of the Modi government, 1,57,967 people have been registered so far. He also said that the Narendra Modi government is committed to providing justice to the displaced people.
Such people will be able to vote, contest elections, and they can also become ministers in Jammu and Kashmir. 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा? मान्यवर, पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं, वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है। Home Minister said that India has not only raised the voice against terrorism, but has also worked to destroy the entire ecosystem of terrorism. Besides, action has also been taken against those who finance terrorism. He said that during the government led by Prime Minister Modi, NIA registered 32 cases of terror financing, whereas before 2014, not a single case was registered. The State Investigation Agency registered 51 cases of terror financing, whereas earlier the need for a state investigation agency was not felt. He said that so far 229 arrests have been made in terror financing cases, and assets worth more than 150 crore have been seized. 57 properties have been seized. Apart from this, the NIA has also done the work of freezing more than 100 crore in 134 bank accounts. Union Minister Amit Shah also said that before 2014, a crowd of 25,000 people used to gather at the funerals of terrorists in Kashmir. But after the abrogation of Article 370, there are no such occurrences. He said that this has become possible because the government has decided that after any terrorist is killed, he will be buried at the spot with full religious rituals. The Home Minister also said that incidents of stone pelting also stopped because the government has decided that if any candidate has a case of stone pelting in his family, he will not be given a government job. That if any member of someone's family, while sitting in Pakistan, encourages terrorism in India, then he will not get any government job. Home Minister added that if on the basis of telephone records it is proved that a person from someone's family is involved in promoting terrorism, then service rules have been made to dismiss him from the job. आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद और उसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है, वो पढ़ाई लिखाई। जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया का एक्सेस और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है। हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। Members cutting across the political spectrum participated in the discussion in the upper house. विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीएसडीपी था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वो 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं, जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। Where our Kashmiri brothers and sisters had to forcibly leave their land in the middle of the night and run away for fear of life. We are providing them a voice today. I think this is a very good step. In this, we are adding one more, that a woman's representative will be there among these two. It's a very good women's empowerment move. आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हुआ कि आपने ये महत्वपूर्ण, और आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से धारा 370 को अपहेल्ड करने का काम किया है
अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, अलग अलग समय पे गए, कुछ शुरू में गए, कुछ बीच में गए, कुछ बाद में गए. But the fact is, sir, कश्मीर की जो tragedy थी was immense. The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 seeks to amend Section 2 of Jammu and Kashmir Reservation Act 2004. The Act provided reservation in jobs and admission in professional institutions to scheduled castes, scheduled tribes, and other socially and educationally backward classes. The amendment bill suggests a change in nomenclature of a section of people who were earlier described as weak and underprivileged classes to other backward classes. Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 seeks to amend the 2019 Act and provide representation in the Legislative Assembly to the Kashmiri migrants and displaced persons from POK. It seeks to nominate 2 members from the Kashmiri migrant community, with one nominee being a woman, and the power of the Lieutenant Governor to nominate 1 person representing the displaced persons from Pakistan-occupied Kashmir to the Legislative Assembly. The bill proposes to increase the total number of seats in Jammu and Kashmir Legislative Assembly from 107 to 140, of which 7 would be reserved for scheduled caste members and 9 seats for legislators from scheduled tribes. As per the bill, 24 seats of assembly will remain vacant until the occupation in Pakistan-occupied Kashmir ceases. The government has a policy of zero tolerance against terrorism. The approach of the government is to dismantle the terror ecosystem. Since the abrogation of Article 370, which granted special status to Jammu and Kashmir, there has been a massive decline in terrorism in the region. Data speaks louder than words. Take a look. A total of 7,217 terrorist incidents took place in Kashmir from 2004 to 14. In the last 10 years, from 2014 till now, only 2,197 terrorist incidents have taken place. From 2004 to 14, a total of 2,829 security personnel and civilians were killed in Kashmir, while from 2014 to 2023, 891 security personnel and civilians have lost their lives, which is 70% less than before. In 2010, there were 2,654 incidents of organized stone pelting, whereas in 2023, just 4 years after the abrogation of Article 370, not a single incident of stone pelting took place. In 2010, 112 civilians were killed in stone pelting, whereas in 2023, there was not a single incident of stone pelting. Hence, there is no question of any casualty. Incidents of ceasefire violations were 70 in 2010 and only 6 in 2023. In 2010, there were 489 infiltration attempts, whereas so far this year, there have been only 48 attempts. In 2010, the number of terrorists who fled the valley was 80, whereas in 2023, this number is 281. The government is fully committed to the overall development of Jammu and Kashmir and has taken several measures that has led to unprecedented growth in the region. 53 projects are being implemented at a cost of 58,477 crore by 15 ministries and departments in the UT of Jammu and Kashmir under Prime Minister's development package in sectors such as roads, power, health, education, tourism, agriculture, skill development. 32 projects have been already completed. 7 new medical colleges have been operationalized. 28 BSc nursing colleges and 19 BSc paramedic colleges have been added. 800 more MBBS seats have been added, totaling to 1,300. Under hydropower generation, MOUs signed for development of 5 mega projects. Smart prepaid metering is under implementation in 3 phases. 4.21 lakh smart meters have already been installed. Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, 6,912 km road length constructed during the last 3 years. A new milestone has been achieved by upgradation of Jammu and Kashmir National Highway by way of constructing 8.45 km long twin tube Kazigod-Banihal tunnel. The air traffic to and from Jammu and Kashmir has been doubled post 2019.
Night landing facilities have been provided in Jammu and Srinagar. Under Jal Jeevan Mission, about 13.54 lakh rural households covering all villages provided with tap water connections. Kashmiri saffron got GI tagging for its uniqueness. Third tourism working meeting of G20 was held from 22nd May to 24th May at Srinagar. This event has placed the UT of Jammu and Kashmir on the global stage. During the calendar year, as many as 1.85 crore tourist arrivals till October 23 have been witnessed. A total of 7.4 lakh self-employment or livelihood opportunities have been generated. Jammu and Kashmir has also been declared open defecation free under Swachh Bharat mission. Jammu and Kashmir is emerging as a noticeable narrative on bringing civility to the land that was once scarred and wounded by terrorism. Now economic development, an important stimulus to aspirational society and basic fundamental rights like education, healthcare, employment, and the pursuit of happiness are no longer hostage to violence. A series of targeted efforts to tide over governance, bottlenecks, financial indiscipline, and lack of monitoring has yielded results in the form of development projects, so that Jammu and Kashmir emerges as leader in implementation of developmental projects and schemes of central government. The abrogation of Article 370 on 5th of August 2019 will be written as golden chapter of history for laying the foundation of beginning of transformation of Jammu and Kashmir. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. Act. A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. क्या भारत बन गया है अंतरिक्ष क्षेत्र की सुपर पावर? भारत के विकसित राष्ट्र बनने की अंतरिक्ष के क्षेत्र से ही निकलेगी क्या कोई राह? रोजगार मेले से कितनी बढ़ रही है देश में रोजगार की संभावना? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से कितना बदला है भारतीयों का जीवन? तमाम बातें जानने के लिए करेंगे संवाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ सिर्फ संसद टीवी पर। Save the temple of democracy. Don't sacrilege the temple of democracy. Please follow the rules. You are required to quit the presence of the house so that legislative work can continue. People of this country pay handsomely to sustain our parliament institution. They have high expectations
They want us to engage in our constitutional ordainment, discharge our obligations. It pains my heart, and it will pain heart of every Indian today, that this upper house that has to enlighten the people at large is ravaging the very idea of our constitutional essence. I plead with you, please leave the presence of the house so that this state legislative work can continue. When I look at some of you, experienced people getting into that mode, we are setting a very dangerous example. We are not only not doing our duty, we are giving an example and losing our relevance. We lost our relevance today, where we could have sent a very sound message to our mothers and sisters by participating in the legislation relating to Jammu and Kashmir. We didn't. In deep pain, I have no option. I have, honorable members, no option. When people obstinately decline to see reason, decline to follow rules, and have reduced themselves to a shouting brigade, which will put to shame the entire institution of parliament, this cannot be countenanced.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। आप कृपा करके बैठिए, बैठ जाइए। आपसे बराबर अनुरोध किया गया है, स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया है, ये उचित नहीं है। प्लेकार्ड दिखाना, आपने सबने सहमति दी है, मिलकर के सहमति दी है कि प्लेकार्ड नहीं दिखाए जाएंगे, नारे नहीं लगाए जाएंगे। प्लीज कृपया करके अपने स्थान पर बैठिए, सहयोग कीजिए। सभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। The House had to be adjourned twice. Thereby the agenda by the House could not be taken up. Honorable members may appreciate that 0-hour submissions and question hour belong to them to raise matters of public importance and hold government accountable. Despite my repeated requests, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violation of the rules of House. Due to their ignoble and grossly disorderly conduct, I hereby name the following members under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of States. Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Shri Ami Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Ratwa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Srimati Phulo Devi Natam, Shri Shakti Singh Goyal,
Sri K.C. Venugopal, he was there earlier creating absolute chaos in the house. Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Srimati Ranjit Ranjan, Sri Imran Pratap Gadi, Sri Randeep Singh Surjewala, Sri Sukhendu Sekhar Ray, Sri Mohammad Nadimul Haq, Sri Abir Ranjan Vishwas, Dr. Shantanu Sen, Srimati Mosam Noor, Sri Prakash Singh Baraik, Sri Samirul Islam, Sri M. Sanmugam, Sri N.R. Ilango, Dr. Kani Moji NVN Somu, Sri R. Girirajan, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fayaz Ahmed, Dr. V. Shiv Darshan, Sri Ramnath Thakur, Sri Anil Prasad Hegde, Srimati Vandana Chauhan, Professor Ram Gopal Yadav, Sri Javed Ali Khan, Srimati Mahua Maji, Sri Jos Ke Mani, Sri Ajit Kumar Bhuyan, Honorable Leader of the House, to move the motion. The above mentioned members be suspended from the service of the council for the remainder of the 262nd session under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The motion is adopted. Are suspended from the service of the council for the remaining part of the 2nd session of Rajya Sabha. The suspended members are required under Rule 256(3) to quit the premises of the Council of States. Despite my repeated request, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violations of the rules of the House due to their ignoble and grossly disorderly conduct, carrying placards in this sacred temple of democracy, committing its severe sacrilege. I hereby name the following members under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. Srimati J.B. Mather Isam, Dr. L. Hanumanthaya, Sri Neeraj Dangi, Sri Rajmani Patel, Sri Kumar Ketkar, Sri G.C. Chandrasekhar, Sri Binoy Viswam, Sri Santosh Kumar P, Sri M. Muhammad Abdullah, Dr. John Bittas, and Sri A.A. Rahim. Disturbance and disruption cannot be allowed to be weaponized to sacrilege this temple of democracy. Honorable Leader of the House to move the motion. Sir, I may be permitted to move a motion under Rule 256(2) and Rule 190. Under Rule 192, I request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places. Honorable members, you will be taken to be supporting it. Because under Rule 92, only those who rise support the motion. Honorable members, I find more than 25 members have risen in their places. The Honorable Leader of the House has the leave of the Council. He may now move the motion. With your kind permission, I move the following motion. The question is that the cases of the above mentioned members be referred to the Committee of Privileges under Rule 191 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, for examination, investigation, and report within the period of 3 months, and the said members be suspended from the service of Council till the House has the benefit of the report of the Committee of Privileges. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. The cases of honorable members stand transferred to the Committee of Privileges, Rajya Sabha. Save the temple of democracy. Don't sacrilege the temple of democracy. Please follow the rules. You are required to quit the proceedings of the House so that legislative work can continue. People of this country pay handsomely to sustain our parliament institution. They have high expectations. They want us to engage in our constitutional ordainment, discharge our obligations. It pains my heart, and it will pain heart of every Indian today, that this upper house that has to enlighten the people at large is ravaging the very idea of our constitutional essence. I plead with you, please leave the presence of the house so that listed legislative work can continue. When I look at some of you, experienced people getting into that mode, we are setting a very dangerous example. We are not only not doing our duty, we are giving an example and losing our relevance. We lost our relevance today, where we could have sent a very sound message to our mothers and sisters by participating in the legislation relating to Jammu and Kashmir. We didn't. In deep pain, I have no option. I have, honorable members, no option. When people obstinately decline to see reason, decline to follow rules, and have reduced themselves to a shouting brigade, which will put to shame the entire institution of parliament, this cannot be countenanced. Act. A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. हमारा G20 साधारण G20 नहीं था. G20 का footfall was there in every state, every union territory, 60 locations in Bharat, 200 interactions. और उसके अंदर क्या मैसेज गया?
भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया। वासुदेव कुटुंबकम को उन्होंने दुनिया के पटल पर रखा। उस प्रधानमंत्री ने रखा जिसने देश को योग दिवस दिया। 21 जून को हर साल मनाया जाता है। उस महान व्यक्तित्व ने जिसने अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यूनाइटेड नेशंस पर प्रभाव डाला, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाज के बारे में, उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया। वासुदेव कुटुंबकम का G20 की थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे देश के मेहनती किसान वर्षों से जी जान लगाकर फसल उगाते आ रहे हैं, लेकिन फसल की कटाई के बाद भंडारण के लिए उचित सुविधाओं की कमी के चलते बड़े पैमाने पर अन्न बर्बाद होता है। मजबूरन किसानों को नुकसान से बचने के लिए कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। किसानों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने समझा और देश में भंडारण की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए मंजूरी दी। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत पैक्स के स्तर पर भंडारण गृह, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानों सहित कई तरह की कृषि अवसंरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से जहां एक ओर कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, वहीं पैक्स को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाकर उनके आय वर्धन में भी मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी प्रधानमंत्री जी ने अभी अप्रूव की। हम इसको ट्रायल बेस पर सभी राज्यों में एक एक पैक्स को ले रहे हैं। इससे हमारा भंडारण व्यवस्था में अगर ये योजना हम सब मिलकर सफल करते हैं, मुझे विश्वास है होगी ही सफल, तो भंडारण व्यवस्था में कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा अगले 5 साल के अंदर होगी। इससे आप समझ सकते हैं पैक्स कितने वायबल होंगे। ये योजना पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से लागू की जा रही है, जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन, PMFME योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY आदि। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री व सचिव भी शामिल हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर इसे निर्बाध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सचिव सहकारिता, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव सहकारिता और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। राज्य व जिला स्तरीय समितियां अपने क्षेत्रों में भंडारण की कमी, मौजूदा भंडारण सुविधाएं, प्रस्तावित गोदामों की क्षमता, आवेदक पैक्स की व्यवहार्यता, प्रस्तावित परियोजना का स्थान, बुनियादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता, बाजार लिंकेज आदि का परीक्षण भी करेंगे। योजना का पायलट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नापकॉन्स, भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWC आदि के सहयोग से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। ये योजना न केवल पैक्स के स्तर पर गोदामों के निर्माण से देश में भंडारण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करेगी, बल्कि पैक्स को कई अन्य गतिविधियां करने में
सक्षम बनाकर ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करने में सहायक होगी। सहकारिता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (FCI) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें पैक्स के स्तर पर बने गोदामों को किराए पर लिया जा रहा है। अब किसानों को अपनी फसल खराब होने के डर से मजबूरन कम कीमत पर उसे बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब वो बाजार की जरूरत के हिसाब से सही समय पर फसल को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी उपज के सही दाम मिलेंगे। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पैक्स, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकान आदि की सुविधाएं शुरू कर अपने किसान सदस्यों के लिए आय के नए रास्ते खोल सकते हैं। ये योजना स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण कर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी और करोड़ों किसानों के जीवन में खुशहाली के द्वार खोलने में मददगार साबित होगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्या भारत बन गया है अंतरिक्ष क्षेत्र की सुपर पावर? भारत के विकसित राष्ट्र बनने की अंतरिक्ष के क्षेत्र से ही निकलेगी क्या कोई राह? रोजगार मेले से कितनी बढ़ रही है देश में रोजगार की संभावना? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से कितना बदला है भारतीयों का जीवन? तमाम बातें जानने के लिए करेंगे संवाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, सिर्फ संसद टीवी पर। भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में ये बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। आइए आपको बताते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल 7वां कर्तव्य क्या है। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। उनकी रक्षा और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। असम के जोरहाट जिले के रहने वाले जादव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अकेले अपने दम पर 1360 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग इस कर्तव्य के निर्वहन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद इस कर्तव्य को पूरा किया है, बल्कि लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रकृति के प्रति ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य भारतीय सदियों से निभाते आ रही है। राजस्थान के सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए बने तालाब और बावड़ियां इन्हीं का उदाहरण है। बनवारी वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई से बने ये सैकड़ों तालाब लाखों लोगों की प्यास इसी प्रकार बुझाते थे। प्रधानमंत्री लगातार पर्यावरण के प्रति अपने इस कर्तव्य की चर्चा करते रहते हैं। अपने मानसिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से भी वे पर्यावरण को बचाने का संदेश प्रेषित करते रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है,
जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं, उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, श्री वी वेंथिलिंगम, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री सप्तगिरी उलाका, श्री अदूर प्रकाश, श्री अब्दुल समद समदानी, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बारदोलोई, श्री गिरधारी यादव, श्रीमती गीता कोरा, श्री फ्रांसिस्को सार्दिन्ना, श्री जगत
रक्षण श्री SR पार्थिवन, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री A गणेश मूर्ति, श्रीमती माला राय, श्री P वेलुसामी, श्री A चल्ला कुमार, श्री शशि थरूर, श्री कार्ति चिदम्बरम, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मसूदी, श्री दानिश अली, श्री खलीलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री DNV सेंथिल कुमार, श्री संतोष कुमार, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री रवनीत बिट्टू, श्री दिनेश यादव, श्री K सुधाकरन, श्री मोहम्मद सादिक, श्री MK विष्णु प्रसाद, श्री PP मोहम्मद फैजल, श्रीमती साजदा अहमद, श्री जसवीर सिंह गिल, श्री महाबली सिंह, श्री अमोल कोल्हे, श्री सुशील कुमार रिंकू, श्री सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर ST हसन, श्री M धनुष कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल थिरुमावलम, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामेत, श्री अदूर प्रकाश। माननीय सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, चेयर की अवहेलना कर रहे हैं। ये वास्तव में कोई ऐसी किसी को भी प्रसन्न करने वाली बात नहीं है, परंतु आपने विवश किया है। बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सारा देश हमको देखता है। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। जी माननीय मंत्री जी। सर, अभी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि हम प्लेकार्ड तटिया अंदर नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो हाल ही में 3 राज्यों का जो 5 राज्यों का चुनाव में सब ये पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ, उसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। जनता इनको जो अभी चुन के आया है, ये लोग भी नेक्स्ट चुनाव में इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं तो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था, ऑल पार्टी लीडर्स रहते हैं, उसमें BSC में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था। नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी तटिया लेके आके स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे, सदन को अपमान कर रहे, देश को, जनता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख से ये कार्रवाई हमको करना पड़ रहा है। यही मैं देश के सामने इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब लाएंगे प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव लाइएगा जी? Honorable Chairperson, sir. Sir, I beg to move the following: that this House, having taken a serious note of the misconduct of Sri V. Vethlingam, Sri Gurjit Singh Ojala, Srimati Supriya Sule, Sri S.S. Ulaka, Sri Adur Prakash, Dr. Abdul Samdani, Sri Manish Tiwari, Sri Pradyut Barodolai, Sri Girdhari Yadav, श्रीमती गीता कोरा, श्री फ्रांसिस्को सेरेडिना, श्री S. जगदरक्षण, श्री SR प्रतिभन, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री A. गणेश मूर्ति, श्रीमती माला राय, श्री P.
वेलुस्वामी, श्री ए चेले कुमार, श्री साक्षी शशि थरूर, श्री मोहम्मद सदीक, श्री एम के विष्णु प्रसाद, श्री पीपी मोहम्मद फैजल, श्रीमती सजदा अहमद, श्री जसवीर गिल, डॉक्टर कार्पी चिदम्बरम, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मुर्शिदी, श्री दानिश अली, श्री खेलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री DNB सेंथिल कुमार, श्री संतोष कुमार, श्री दौलचंद गोस्वामी, श्री रणवीर सिंह बिट्टू, श्री दिनेश चंद्रा यादव, श्री के सुधाकरण, श्री अमोल खोले, श्री सुशील कुमार रिंकू एंड श्री महाबली सिंह MP and श्री सुनील कुमार सिंह, श्री ST हसन, श्री M धनुष कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल तिरुमावलम, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामत MP in utter disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Bill. A draft of a legislative proposal put in the proper form, which when passed by both the Houses of Parliament and assented to by the President, becomes an act. Business of the House. The relative order of all the items of business in the House of a legislature to be taken up on a particular day. Government business for a whole week is announced in advance in the House by the Minister for Parliamentary Affairs. Calling attention. A procedure whereby a member calls the attention of a minister to a matter of urgent public importance. The minister makes a brief statement thereon, and thereafter the members seek clarifications. Legislative business. Introduction, consideration and passing of a bill piloted by a minister or a private member in the House. क्या भारत बन गया है अंतरिक्ष क्षेत्र की सुपर पावर? भारत के विकसित राष्ट्र बनने की अंतरिक्ष के क्षेत्र से ही निकलेगी क्या कोई राह?
रोजगार मेले से कितनी बढ़ रही है देश में रोजगार की संभावना, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से कितना बदला है भारतीयों का जीवन। तमाम बातें जानने के लिए करेंगे संवाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, सिर्फ संसद टीवी पर। The House had to be adjourned twice. Thereby, the agenda by the House could not be taken up. Honorable members may appreciate that 0-hour submissions and question hour belong to them to raise matters of public importance and hold government accountable. Despite my repeated requests, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violation of the rules of House. Due to their ignoble and grossly disorderly conduct, I hereby name the following members under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of States. Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Shri M.E. Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Ratwa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Srimati Fulo Devi Natam, Shri Shakti Singh Goyal, Shri K.C. Venugopal. He was there earlier creating absolute chaos in the House. Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri Imran Pratap Gadi, Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Sukhendu Sekhar Ray, Shri Mohammad Nadimul Haq, Shri Abir Ranjan Vishwas, Dr. Shantanu Sen, Shrimati Mosam Noor, Shri Prakash Singh Baraik, Shri Samirul Islam, Shri M. Sanmugam, Shri N.R. Ilango, Dr. Kani Moji NVN Somu, Shri R. Girirajan, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fayaz Ahmed, Dr. V. Shiv Darshan, Shri Ramnath Thakur, Shri Anil Prasad Hegde, Shrimati Vandana Chauhan, Professor Ram Gopal Yadav, Shri Javed Ali Khan, Shrimati Mahua Maji, Shri Jos K. Mani, Shri Ajit Kumar Bhuyan, Honorable Leader of the House, to move the motion. The above mentioned members be suspended from the service of the council for the remainder of the 262nd session under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The motion is adopted. Are suspended from the service of the council for the remaining part of the 2nd session of Rajya Sabha. The suspended members are required under Rule 256(3) to quit the premises of the Council of States. Despite my repeated request, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violations of the rules of the House due to their ignoble and grossly disorderly conduct, carrying placards in this sacred temple of democracy, committing its severe sacrilege. I hereby name the following members under Rule 256
of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Srimati J.B. Mather Isam, Dr. L. Hanumanthaya, Sri Neeraj Dangi, Sri Rajmani Patel, Sri Kumar Ketkar, Sri G.C. Chandrasekhar, Sri Binoy Viswam, Sri Santosh Kumar P, Sri M. Muhammad Abdullah, Dr. John Britas, and Sri A.A. Rahim. Disturbance and disruption cannot be allowed to be weaponized to sacrilege this temple of democracy. Honorable Leader of the House to move the motion. Sir, I may be permitted to move a motion under Rule 256(2) and Rule 190. Under Rule 192, I request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places. Honorable members, you will be taken to be supporting it. Because under Rule 92, only those who rise support the motion. Honorable members, I find more than 25 members have risen in their places. The Honorable Leader of the House has the leave of the Council. He may now move the motion. With your kind permission, I move the following motion. The question is that the cases of the above mentioned members be referred to the Committee of Privileges under Rule 191 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, for examination, investigation, and report within the period of 3 months, and the said members be suspended from the service of Council till the House has the benefit of the report of the Committee of Privileges. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. The cases of honorable members stand transferred to the Committee of Privileges, Rajya Sabha. Save the temple of democracy. Don't sacrilege the temple of democracy. Please follow the rules. You are required to quit the proceedings of the House so that legislative work can continue. People of this country pay handsomely to sustain our parliament institution. They have high expectations. They want us to engage in our constitutional ordainment, discharge our obligations. It pains my heart, and it will pain heart of every Indian today, that this upper house that has to enlighten the people at large is ravaging the very idea of our constitutional essence. I plead with you, please leave the presence of the House so that this state legislative work can continue. When I look at some of you, experienced people getting into that mode, we are setting a very dangerous example. We are not only not doing our duty, we are giving an example and losing our relevance. We lost our relevance today, where we could have sent a very sound message to our mothers and sisters by participating in the legislation relating to Jammu and Kashmir. We didn't. In deep pain, I have no option. I have, honorable members, no option. When people obstinately decline to see reason, decline to follow rules, and have reduced themselves to a shouting brigade which will put to shame the entire institution of parliament, this cannot be countenanced. भारत में लगभग 8 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनके 29 करोड़ से भी अधिक सदस्य हैं। ये सहकारी समितियां लगभग सभी सेक्टरों में कार्यरत हैं, जैसे कृषि, डेयरी, पशुधन, हस्तशिल्प, हर्बल दवाएं,
चमड़ा आदि। ये समितियां विभिन्न सेक्टरों में योगदान ही नहीं देती, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सहकारी समितियों के कई उत्पादों की अनेक देशों में भारी मांग है। आज आप ये भी देख रहे हैं कि भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया की चर्चा भी आज पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में आज सरकार का प्रयास है कि सहकारिता भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाए। विदेशी बाजार में सहकारी समितियों का उत्पाद बिक सके और उनके सदस्यों को इससे आर्थिक लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तथा श्री अमित शाह माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का गठन किया है। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी सहकारी समितियां जो निर्यात कार्यों में अभिरुचि रखती हैं, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के सदस्य बन सकती हैं। ये समिति निर्यात से जुड़े काम जैसे प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, शोध, तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार का विकास आदि सभी क्षेत्रों में अपने सदस्यों की सहायता करेगी। ये समिति राष्ट्र स्तर पर काम करेगी और इसे विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और संस्थानों का सहयोग मिलेगा। अब ये मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट समिति किसान के पास से या पैक्स के पास से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदकर दुनिया भर के बाजार में बेचेगी और इसका मुनाफा भी मिल्क कोऑपरेटिव की पैटर्न पर सीधा किसान के पास जाएगा। वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नहीं रखेगी। एक्सपोर्ट का फायदा मेरे किसान भाइयों को होगा। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड अपने सदस्यों को विश्व बाजार से लाभ दिलवाएगी, रोजगार बढ़ेगा और सहकार से समृद्धि की परिकल्पना साकार होगी। राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए नीचे दी गई ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.cooperation.gov.in। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनाए गए मौलिक कर्तव्यों का मूल उद्देश्य नागरिकों को संविधान का पालन करने के लिए प्रेरित करने और आदर्श विचारों को बढ़ावा देने का है। आइए आपको बताते हैं संविधान में वर्णित 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रखना। सरकार की संपत्ति जैसे कि ऐसे भवन या संपत्तियां जिनका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता हो, तेल संबंधी प्रतिष्ठान, खान या कारखाना, सीवेज संबंधी कार्यस्थल, लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति सभी सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 भी बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना और अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखना, लेकिन उसको हम पीसफुल वे में रख सकते हैं, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके। और अगर कोई अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाता है तो उसकी रिकवरी के लिए, उसको सजा देने के लिए
कानून में 1984 में पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसमें प्रावधान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, जिसमें मिनिमम सजा का 6 महीने का प्रावधान है। अक्सर देखा जाता है कि विरोध के नाम पर सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया जाता है और उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि मूल कर्तव्य में कहा गया है कि हमें हर हाल में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति यथा बस, इमारत आदि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे रोकना चाहिए। सरकारों ने कुछ अपनी तरफ से कदम लिए, जैसे कि यूपी में किया गया, डिफेम करने की बात की गई, डिफेम डी नेम की बात की गई। आई थिंक ये एक अच्छा प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए 2019 में एक जजमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसी को भी आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना एंगर एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, आप हड़ताल कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो आपको लायबिलिटी होगी कि आप उसके लिए क्षतिपूर्ति करें। महात्मा गांधी के शब्दों में मौलिक अधिकार वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों को अत्यंत समर्पण और सच्ची ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि कर्तव्य और अधिकार आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। अधिकार व्यक्ति को कर्तव्य के शर्त पर ही मिल सकते हैं। महात्मा गांधी की इस बात को प्रधानमंत्री भी दोहरा चुके हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत काल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम बात करेंगे HAL के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। एवियोनिक्स सिस्टम पर HAL ने काफी विस्तार से काम किया है, जिसके अंतर्गत आता है एडवांस एयरक्राफ्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और जितने भी इक्विपमेंट्स एयरक्राफ्ट के भीतर में लगते हैं। आर्म्ड फोर्सेस को जिन तकनीकों की जरूरत है उन पर सबसे ज्यादा इस वक्त HAL काम कर रहा है। आज हम आपको ऐसी तकनीकों की झलक दिखाने जा रहे हैं जिसके लिए अब तक तो हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज वो भारत के पास है, क्योंकि भारत बात करता है मेक इन इंडिया की, मेड इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत बने।
The strength, the pride, the glory of India's defense and aerospace production. Hindustan Aeronautics Limited. For 8 decades, HAL has been a proud leader in India's defense and aerospace sector. With its cutting-edge design, production, repair and upgrade facilities, HAL has been a driving force in the industry with its Make in India initiatives. Avionics are integral to military aircraft and their capabilities. A strong domestic avionics industry is crucial for national defense, ensuring that a country can maintain and upgrade its military aircraft independently without relying on external sources. Further, avionics is the fastest growing market with an average CAGR of almost 8%, with high margin potential, with projected 70 billion market by 2030. Given entry barriers with respect to design and certification of avionics system, it's high time for Indian aerospace and defense ecosystem to take up avionics R&D and manufacturing on war footing. Avionics is the major constituent of modern-day aircraft, and HAL has dedicated R&D centers to cater to the modern-day needs. Equipped with state-of-the-art infrastructure and pool of talented manpower, the R&D centers provide a complete package for a wide range of indigenously designed, developed, qualified and reliable systems and solutions for avionics. Avionics is an important component of any flying machine as it empowers the pilot with critical information, ensures seamless communication, enables precise navigation, all of which are important for any modern aviation platform. Avionics is the backbone of modern aerospace systems and has helped enhancing the capabilities of our defense forces. It has played a vital role in enhancing operational capabilities, situational awareness, and mission success of military aircrafts, cutting across fighters, transport aircrafts, helicopters, and UAVs. Identification systems are integral for ensuring situational awareness, contributing to operational security and coordination in aviation and maritime surveillance. HAL offers a wide range of indigenously designed and developed advanced technology mission systems and integrated solutions for enhancing the technical and operational capabilities of the existing fleet with upgrades. HAL upgraded and commissioned the Air Combat Simulator, Navigation and Weapon Systems Mission Simulator, Mirage Mission Simulator and Avionics Part Task Trainer. We also offer fixed and full motion simulators for various aircraft and helicopter platforms. Come, join us in our journey of innovation and creation of world-class avionics systems and solutions. Partner with us and cherish the pride of Atmanirbharta. Let's soar higher and higher together. भारत मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की रेस में आज काफी आगे निकल चुका है, जिसमें कि HAL की भूमिका काफी बड़ी है। जैसे कि इस समय आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है और कैसे इसमें जो लगे हुए इक्विपमेंट्स हैं जिस पर HAL काफी डिटेल में काम कर रहा है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ में इस वक्त डायरेक्टर इंजीनियर एंड R&D डॉक्टर DK सुनील HAL मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका संसद टीवी में। हम बात कर रहे हैं सर मेक इन इंडिया की। आप अगर मैं HAL की बात करूं तो काफी टाइम से बहुत ही बारीकी से HAL इस वक्त जो भी जरूरतें हैं खास करके एयरक्राफ्ट में उस पर काम कर रहा है। हमें अगर आप समझाना चाहें आज हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच चुके हैं। 70% जो हमारे एयरक्राफ्ट है डिफेंस फोर्सेस के पास वो HAL बना चुका है और उसको मेंटेन कर रहा है।
और एवियोनिक्स के क्षेत्र में करीब 50 साल से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेड आइटम्स है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे 3 R&D सेंटर्स हैं जो इस पर काम करते हैं, एवियोनिक्स पे स्पेसिफिकली। जो आइडेंटिफिकेशन है, कम्युनिकेशन है, जो भी पायलट यूज करता है, जो अटैक हेलीकॉप्टर है जैसे प्रचंड है, इसका जो कैपेबिलिटी है वो पूरा एवियोनिक्स पे निर्भर है। अगर हम अपने व्यूवर्स को बहुत ही साधारण शब्दों में समझाना चाहें, एवियोनिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ये 2 पायलट अगर बैठे हुए हैं, एक पायलट है, एक को पायलट होते हैं साथ में, तो इसके अंदर जो भी सामान लगे हैं, चाहे वो अटैकिंग के हो या फिर आपको सेंसर हो, उस पर एचएएल ने काम किया। सर, हमें अगर समझाना चाहें कौन कौन से आइटम होते हैं जो बेहद जरूरी हो? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्लास कॉकपिट जो बोलते हैं, जो डिस्प्ले से पहले के एयरक्राफ्ट में सब डायल्स होते थे, मैकेनिकल डायल्स, तो काफी मुश्किल होता था। तो अभी जो 4 स्क्रीन है, उस स्क्रीन में पूरे एयरक्राफ्ट का इंफॉर्मेशन दिखता है और जो भी अटैक करना है वो सेंसर्स का डेटा सब दिखता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो जो कॉकपिट वहां पे लगा हुआ है, तो पायलट को 4 स्क्रीनों में सब इंफॉर्मेशन मिलता है और वो डिसीजन ले सकता है कि अटैक कैसे करे, कहाँ करे। ये इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले सूट है। ये हमने इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किया है हमारे एचएएल में। ये अभी फिलहाल हमने एलसीएच प्रचंड प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया था और उसको प्रूव भी कर लिया है, और अभी हम उसको एएलएच में भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। और बेसिकली इस पूरे आर्किटेक्चर में जो यूनिट है वो हमारा मिशन कंप्यूटर है, ये ब्रेन है उसका। उसके अलावा कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट्स और मल्टी फंक्शनल फ्लाइट डिस्प्लेज हैं। तो ये पायलट को हेल्प करेंगे उनके सारे नेविगेशन, सर्विलेंस, अटैक ऑपरेशंस, मिशन मैनेजमेंट, इन सब का सारे ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो इट हैज फुल कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ये सारे रोल्स जो हैं उसके। इसमें इनबिल्ट एल्गोरिथम्स है, इंटीग्रेटेड डिजिटल मैप डिस्प्ले हैं जो सारे नेविगेशन, सर्विलेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो हेलीकॉप्टर में जो अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, सिस्टम, सेंसर्स, ये सारा डेटा इस यूनिट में आता है, मिशन कंप्यूटर में आता है। ये सारा डेटा प्रोसेस होके पायलट को भेजा जाता है थ्रू दिस डिस्प्ले यूनिट्स, so that he can see what is happening on the aircraft. He will be aware of the situation and perform the operations. आपकी भूमिका क्या है एचएएल के अंदर? एचएएल के अंदर मैं डिजाइन सेंटर में को बिलोंग करती हूँ। तो बेसिकली ये चीजें जो हैं ये हमारे ही द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये हमने डिजाइन किया हुआ है इसका। सर, कितनी महिलाएं होंगी एचएएल में? एचएएल में करीब 20 to 30% महिला होंगी R&D सेंटर्स में। वैसे प्रोडक्शन में जो फैक्ट्री में है कम होंगे, बट डिजाइन सेंटर में करीब 30% तक है। ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए रोकी क्योंकि अगर मिशन मंगल से बात करें, मिशन मंगल से लेकर के सर एचएएल तक हर तरफ हम लोग महिलाओं की भूमिका देख रहे हैं, और एक बहुत अच्छा कदम है कि ऐसी महिलाओं ने एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया है। हम फिर सब यही बनाए हैं, ये लोग बनाए, इनका टीम बनाया है सॉफ्टवेयर सब, तो इनका ये बहुत बड़ा योगदान है। सारिका, हम लोग बात कर रहे थे, एक दिमाग में भारत ने रख लिया है कि अब जो भी होगा वो मेड इन इंडिया होगा। कितनी बड़ी चुनौतियों से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है? कैसे आप लोगों ने अपने लक्ष्य को पार पाने के लिए सोच रखा है? चुनौतियां हैं, लेकिन हाँ, चुनौतियों को पार पाना भी हम लोग को आता है। तो अभी जैसे हमने इसको एलसीएच प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है, उसको प्रूव कर लिया है। अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं एएलएच प्लेटफॉर्म के लिए। तो अभी तक एएलएच में जो बाहर से हम इम्पोर्टेड आइटम लगाते थे, अभी आगे आने वाले उन प्लेटफॉर्म्स में वो सब रिप्लेस करके वी विल बी पुटिंग अवर ओन इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड यूनिट्स। हमारा जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स है, जो पायलट को बताता है कि जो एयरक्राफ्ट सामने है ये फ्रेंड है या एनिमी है, तो इसको बोलते हैं आईएफएफ, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। ऐसा भी होता है सर? वरना आपको आकाश में एक कुछ एयरक्राफ्ट दिख रहा है, वो दोस्त है या दुश्मन है, कैसा पता चलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये एक्सचेंज होता है, और जो कोड जाता है वो अगर वहां से कोड ठीक आया तो वो दोस्त है, और कोड गलत आया तो वो दुश्मन है। तो ये हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, ये हैदराबाद में। MOD E5 सिस्टम क्या है मैम? ये Mode 5 is an advanced secure mode, which is a advanced mode 4 से advanced secure mode. It's a two-way encrypted mode. Mode 4 is a one-way encrypted.
And Mode 5 has advanced features like anti-jamming features, and it also acts as a secure data link. Mode 4, it's only up to identification, but Mode 5, it can exchange all the aircraft parameters like latitude, longitude in a secure way. It employs encryption and decryption algorithms, wherein if we do the proper authentication, only the reply will be transmitted from the transponder, so that only our friendly aircraft will be identified with this Mode 5. सर कितना जरूरी है सिस्टम को डेवलप करना, अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, अगर गलती हो गया, अगर इसका आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं हुआ, तो आपका ग्राउंड खुद आपको अटैक कर सकता है, मिसाइल फायर कर सकता है। तो ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है हर एक एयरक्राफ्ट के लिए, जब वो फ्लाई कर रहा है, कि आपके ग्राउंड फोर्सेस, आपके जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है उनको पता चलता है कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है, दुश्मन का नहीं है। तो ये तो हर एक एयरक्राफ्ट में जाएगा, हर एक शिप में जाएगा, तो ये बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट है। एंड ये लोग अभी जो बनाए हैं, ये हर एक प्लेटफॉर्म में जाता है, चाहे LCA हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे शिप हो, ये हर जगह पे जाता है। और जो नया आविष्कार है या जो नया प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, ये है कंबाइंड इंट्रोगेटर ट्रांसपॉन्डर। यानी इसमें वो तो जस्ट रिप्लाई देता है, इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रिप्लाई भी ले सकता है। तो एक बॉक्स में दोनों आ गए हैं, जो कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी अचीवमेंट है। कंप्लीट इंडिजिनियस प्रोडक्ट है ये। दिस इज जनरेटिंग 1.2 किलोवाट पावर एंड इट विल डिटेक्ट द टारगेट्स अप टू 300 किलोमीटर्स का रेंज है। इट इज हैविंग ए सिक्योर मोड ऑफ इंट्रोगेशन एंड रिप्लाई प्रोसेसिंग। सो उसका है एक क्रिप्टो मॉडल लगा हुआ रहता है, उसका बेस्ड अपन की इट विल आइडेंटिफाई एंड वेदर इट इज अ फ्रेंड ऑफ। उसको पायलट को कलर कोडिंग चेंज करके उसको दिखा सकते हैं। अगर ऐसा ग्रीन लगा दिया तो ये और फ्रेंड टारगेट है, अदर टारगेट्स विल बी डिस्प्लेड इन ए डिफरेंट कलर। सर ये सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी तकनीक है कि हम बातचीत के जरिए, कोड्स के जरिए हम ये पता लगाते हैं, क्योंकि ऊपर में आपको कोई बताने वाला नहीं है कि, और ये भी मालूम नहीं है कि सामने आपका दुश्मन है या दोस्त है। तो कोड्स और बातचीत के जरिए, लेकिन इस तकनीक को भी हम बाहर बना रहे थे, लेकिन अब भारत ने इस पर भी अपनी पहुंच पा ली। आज तो हर एक एयरक्राफ्ट और इसमें हमारा इंडिजिनस वाला आइटम ही है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं होता, एब्सोल्युटली कुछ भी इंपोर्टेड नहीं है, सब हमारे देश में ही बनता है। डॉक्टर DK सुनील, डायरेक्टर इंजीनियर एंड R&D के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने की वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आत्मनिर्भरता का जो बुलावा आया है, ये बहुत जरूरी है, और जो प्रधानमंत्री ने दिया है कि सब इंडिया में बनना है, तो इसीलिए आप देखिए एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी बनाया गया है, जी कि इतने सालों के बाद ये इंपोर्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे लिए स्फूर्ति है कि ऐसा एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है उसको बनाना चाहिए और उसको एयरक्राफ्ट में लगाना है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी हेल्प है जो सरकार ने ये नीति बनाई है। तो हम तो इस पर अब डट कर काम कर रहे हैं, और आगे 4-5 सालों में आप देखेंगे कि जितने भी एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स है, कंपोनेंट्स है, हम उसको इंडिजिनाइज करेंगे और उसको भारत में ही बनाएंगे। अब किस तकनीक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं? ये जो है, ये रेडियोस है जो पायलट ग्राउंड से बात कर सकते हैं, और जो डेटा लिंक है जो डेटा भेजते हैं, और अगर इमेज है, इमेज से कुछ ट्रांसमिट करना है ग्राउंड पे, तो ये हेलीकॉप्टर्स में लगते हैं। और ये जो मैनपैक है, इससे ये बात कर सकता है, ये सोल्जर के पास है, और ये मैनपैक ये एयरक्राफ्ट में लगता है। ये दोनों अभी सिक्योर मोड में बात कर सकते हैं, यानी सीक्रेट मोड में। कोई और नहीं सुनेगा आपकी बात। ज्योति बताएंगे इसके बारे में? बेसिकली सर मैम, ये ACS-235 हमारा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये ALH, LCH, STT-40, LUH सारे हेलीकॉप्टर्स में है। इसमें बेसिकली हमारा अपना होम ग्रोन इंक्रिप्शन और एंटी जैम वेवफॉर्म्स हैं। इंक्रिप्शन जो कोई सुन नहीं सकता, एंटी जैम जो कोई जैम भी नहीं कर सकता मुझे। तो अब एक रिक्वायरमेंट है कि अब ये चीज नीचे वाले जो ट्रूप्स हैं, हमारे फ्रंट सोल्जर्स हैं, वो भी हमसे बात कर सके। तो उसके लिए हमने ये डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो जहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल इंटीग्रेट होता है, और ये दोनों आपस में जब इंटीग्रेट होके देन ये एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल हो जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो काफी यूनिक है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन करने में 4-5 साल लग जाते हैं, बट अभी तो ये बन चुका है और ये ऑलरेडी फील्ड में डिप्लॉय भी हो चुका है। इससे पहले सर जब HAL के पास नहीं था, तो इसे हम कौन से देश से
इंपोर्ट कर रहे थे? ये काफी देशों से इंपोर्ट होता था, फ्रांस से इंपोर्ट होता था, इसराइल से इंपोर्ट होता था। तो आज बेल ये बनाता है और हम ये एयरक्राफ्ट के लिए बनाते हैं, ये बेल ग्राउंड ट्रूप्स के लिए बनाते हैं, तो ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ये हमारा सबसे नया आविष्कार या मैं बोलता हूँ इनोवेशन है कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। अगले जैसे हमारा सेल फोन में आजकल काफी फीचर्स आते हैं, ऐसा ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है कि इसमें डेटा, वॉइस, हर किस्म का काम हो सकता है और मल्टी बैंड भी है। इस रेडियो की जो भी फंक्शनैलिटी है वो ऐसे ऐप जैसा आप समझ सकती हैं कि जो भी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है वो एज ए डिफरेंट ऐप जैसा स्टोर रहता है और यूजर को जो भी एप्लीकेशन चाहिए वो करेस्पॉन्डिंग ऐप सेलेक्ट करके वो फीचर को इनेबल कर सकता है। ये फ्लेक्सिबल कर सकता है। जैसे एयर में मल्टीपल एयरक्राफ्ट है तो ये नेटवर्किंग कर सकता है, इमेज शेयर कर सकता है, वॉइस कर सकता है, वॉइस और इमेज दोनों पे साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो ये जो मल्टीपल एयरक्राफ्ट है इनके बीच में ये नेटवर्क बना के बैटलफील्ड जो आगे की बैटलफील्ड है उसमें ये नेटवर्किंग बहुत जरूरी है कि आपको हर एक एयरक्राफ्ट के बारे में सिचुएशन पता है और एनवी का सिचुएशन जो है अगर कहीं से पिकअप हुआ रडार से तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। तो ये डेटा लिंक है जो हमारे यूएवीज में जाते हैं और जैसे मैं बोल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल सिस्टम है जिसमें वॉइस रिकॉग्नाइज जैसा आपका एलेक्सा है, ये कमांड से काम करता है। एलेक्सा ऑफ द एयरक्राफ्ट है। हालांकि हम जब घर पे बात करते हैं तो शांत वातावरण में बात करते हैं, बट ये एयरक्राफ्ट में इतना नॉइज रहता है उसके वो एनवायरनमेंट में इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो ये हमारा अभी नया बॉक्स में जाएगा और ये एयरक्राफ्ट में मार्क 2 एएनसी मार्क 2 में भी जाएगा कि पायलट का जो लोड है, वर्कलोड है वो कम होगा और वो कमांड्स के जरिए एक्टिविटीज एक कॉकपिट में कर सके। जो हमारा रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन है, जो रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या मतलब, ये इसका मतलब क्या होता है सर? जब अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो आपको मालूम है ब्लैक बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स, हालांकि ब्लैक बॉक्स नहीं होता, एक्चुअली वो ऑरेंज होता है। जो इसमें जो भी एयरक्राफ्ट का डेटा है क्रैश के पहले का वो सब इसमें स्टोर होता है और उसके बाद उसको रिट्रीव करके जैसे ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करके अंदाजा लगाया जाता है। बहुत जरूरी है सर ये जानकारी। This is a flight data recorder, so it stores all critical parameters which is required for any incident or accident investigation. So this is having a crash proof memory. So even aircraft is destroyed, we can retrieve the data from memory. So this is the main function. It stores data as well as audio of pilot. हर एक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत जरूरी है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और जो ये हमारा R&D सेंटर बनाता है ये हर एक प्लेटफॉर्म में जाता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिक्स विंग हो या फाइटर हो, हर एक में ये लगता है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और ये 100% यहीं पे इंडिया में डिजाइन किया। When it falls in the water, it start emitting the signal. Earlier it was 30 days, now up to 90 days we can retrieve the unit from water also. And it is a very advanced system. It can record 100 hours of data, 25 hours of audio of pilot for all 4 channels, pilot, co-pilot, area mic. And it can give the health of the aircraft also. By after debriefing the data, milking out the data, we can tell all the sensor data, how it is health. All aircraft profile can be predicted. महत्वपूर्ण जानकारी कि इसके जरिए, हालांकि मैं एक बार इनकी जानकारी को ही आप तक फिर से पहुंचाना चाहूंगी कि अगर ये पानी में भी चला जाता है तो ये सिग्नल देता है कि हाँ यहाँ पर है, जिससे ढूंढने में बहुत आसानी होती है। सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई फ्लाइट, कोई अगर हेलीकॉप्टर अगर क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढने में काफी समय चला जाता है, तो क्या उसका ख्याल रखा गया है इस बॉक्स में? जी, अलग एक इक्विपमेंट रहता है, इसमें एक इमरजेंसी ट्रांसमीटर रहता है, जैसे आप देख रहे हैं वो उसमें इमरजेंसी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और उसके जरिए वो लोकेट होता है कि कहाँ पे गिरा हुआ। स्वदेशी तकनीक से बना डिजिटल मैप जनरेटर है सुखोई 30 और जगुआर प्लेटफॉर्म के लिए, और ये पायलट का मैप इन द स्काई है जिसके ऊपर पायलट अपने सामने 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देख सकता है। जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मैप एक बार में लोड हो जाता है।
पुष्पेंद्र, आप मुझे ये समझाइए कि क्या भारत ने इसको डिजाइन करते समय या एचएएल ने इसको डिजाइन करते समय कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग यानी कोई आधुनिक तकनीक के बारे में हमने सोचा है जिसे हमने एक्सक्लूसिवली हमने इसमें डाला है? जैसे इसके अंदर सबसे आधुनिक टेक्निक वीडियो आउटपुट के मामले में है। पहले जो पुराने एनालॉग वीडियोस होते थे, अब ये डिजिटल वीडियो पर है, अरिंग 818 टेक्नोलॉजी पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हमने एक ही साथ इतनी ज्यादा मैप की कैपेबिलिटी दे दी है कि आप एक सिंगल गो में पूरा साउथ ईस्ट एशिया लोड कर सकते हैं, और जब तक कि आप उससे बाहर नहीं जाते, मतलब बाकायदा चीन का एरिया, आपके श्रीलंका का एरिया, इधर संपूर्ण पाकिस्तान का एरिया आप लोड कर सकते हैं, और पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हमने 3D एक बहुत ही सेफ्टी फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स में। तो एक बहुत फीचर ये होता है ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग की। जब आप उड़ रहे होते हैं उस साइट पर, तो आपके सामने आपका जो टेरेन है ये आपके लिए बहुत ही खतरा वाला ये होता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसके अंदर, आप ट्रेन पर उड़ते के साथ 3D टेरेन में आप देख सक रहे हैं लाल का जो एरिया है वो उसके लिए खतरा है, और जो ट्रांसलूसेंट येलो में है वो उसके लिए ये है। तो पायलट की जान बचाने में किसी भी समय दिन या रात ये काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी डिजाइन यहाँ पर हैं उसे आइडिया से लेकर के उसे डेवलप करने में डॉक्टर डीके सुनील जो कि एचएएल से हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है। सर आगे क्या कुछ एम रखा है एचएएल ने कि जो हमें जिस पर जरूर काम करना? हम देखिए अभी एक 13 टन हेलीकॉप्टर IMRH डेवलप कर रहे हैं, जो कि इंडियन रशियन हेलीकॉप्टर उसके काफ़ी इक्विपमेंट बनेंगे। और LCM Mark II पे हम काम कर रहे हैं, जो एक नया डिज़ाइन है एडाक के साथ। और जितने भी नए एयरक्राफ्ट जैसे NCH में नए इक्विपमेंट लगा रहे हैं, वेपन्स लगा रहे हैं, और हम UAVs पे काम कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बहुत जरूरी है सर। तो अब देखिए कि HAL के पास काफ़ी नए डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स है, और एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि हम Su-30 का जो रशियन एवियोनिक्स है उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, एक अपग्रेड प्रोग्राम कर रहे हैं। हाल ही में वो क्लियर हुआ है। तो HAL हर एक प्लेटफॉर्म पे नए इक्विपमेंट और नए कैपेबिलिटीज जो बना रहे हैं एयरफोर्स के लिए। तो हमारे पास काफ़ी काम है, और हम हमारे जो भी इंजीनियर्स हैं, आप देख रहे हैं इतने उत्साहपूर्ण लोग हैं इधर, और काफ़ी यंगस्टर्स हैं, तो ये सब इस पे काम करेंगे। और डेफिनेटली अगले आखिर में आपका रिएक्शन, एचएएल ने जिस तरीके से तेजस और तेजस के जरिए जिस तरीके से भारत का नाम रोशन हुआ है, उसमें जब प्रधानमंत्री ने फ्लाई किया, क्या रिएक्शन रहा उस वक्त की, अगर उस वक्त के अनुभव को अगर आप हमारे साथ में शेयर कर सके? देखिए ये तो रेड लेटर डे था हमारे लिए कि प्रधानमंत्री तेजस में जब फ्लाई किए, तो हमारे लिए इतने सालों का जो हमारा मेहनत था उस पे तो एकदम वो एंडोर्समेंट था कि अगर देश के प्रधानमंत्री वो एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं तो हमारे लिए तो ये तो बहुत बूस्ट है और कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। तो हम और डट कर काम करेंगे। कोई मैसेज उनका मिला फ्लाई करने के बाद वो आए और उनका कोई संदेश एचएएल को मिला हो, या फिर उन्होंने कोई रिप्लाई दिया हो फ्लाई करने के बाद? वो जब हमारे हैंगर में आए तो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत बेहद खुशी हुई ये सब। ये उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे लगता है सर ये वर्ड्स काफी, बहुत बहुत शुक्रिया सर संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डायरेक्टर इंजीनियर एचएएल। पूरी रिसर्च के बाद में इतने सारे जो इनोवेशन है आज वो आपके सामने हैं, और निश्चित तौर से अभी भारत की प्लानिंग आगे भी बहुत बड़ी है, और ऐसे भी और इनोवेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन महावीर के साथ प्रांजलि सिंह, संसद टीवी, दिल्ली। क्या भारत बन गया है अंतरिक्ष क्षेत्र की सुपर पावर? भारत के विकसित राष्ट्र बनने की अंतरिक्ष के क्षेत्र से ही निकलेगी क्या कोई राह?
रोजगार मेले से कितनी बढ़ रही है देश में रोजगार की संभावना, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से कितना बदला है भारतीयों का जीवन। तमाम बातें जानने के लिए करेंगे संवाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, सिर्फ संसद टीवी पर। भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। Naming a member. The drawing of attention of the House by the chairman to the conduct of a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the House by persistently and willfully obstructing the business thereof, with a view to action being taken to suspend him from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session. Ordinance. A law made by the President in exercise of the powers vested in him under Article 123 of the Constitution. Question of privilege. A question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a committee thereof, or a contempt of the House. Development of green hydrogen production capacity of at least 5 million metric ton per annum. Over 8 lakh crore in total investments. Creation of over 6 lakh jobs. Cumulative reduction in fossil fuel imports of over 1 lakh crore. Abatement of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gas emissions. Making India a leading producer and supplier of green hydrogen in the world. India is undertaking a resolute march towards a sustainable energy future. It has announced a target of energy independence by 2047 and a net zero by 2070. The thrust towards low carbon economy currently hinges on an accelerated transition towards a higher share of renewables in the electricity grid, complemented by electrification of end users such as transportation.
विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Prateek Mishra. Today Sunset TV has boarded India's first hydrogen fuel cell bus. In this edition, we've packed everything for you. What makes hydrogen the fuel of future? What does India's green hydrogen mission mean for its energy transition? And much more. So come with me on this green and clean journey. India's deep commitment to aspirational climate goals has been widely acknowledged in the Committee of Nations. Our achievements have matched our ambition. India is the fastest growing renewable energy capacity in the world. It has also emerged as one of the most attractive destinations for investments in renewables. As India has set its sight on becoming energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070, the role of green hydrogen assumes paramount importance. India, with its vast renewable energy sources, also has the opportunity to produce green hydrogen for the world. The National Green Hydrogen Mission aims to provide a comprehensive action plan for establishing a green hydrogen ecosystem and catalyzing a systemic response to the opportunities and challenges in this sunrise sector. As India's growth story unfolds, its demand for energy and resources is set to rise. Energy use has doubled in the last 20 years and is likely to grow by at least another 25% by 2030. India currently imports over 40% of its primary energy requirements, worth over $90 billion every year. Major sectors like mobility and industrial production are significantly dependent on imported fossil fuels. This mandates a shift towards technologies that enable enhanced share of renewable sources in the energy mix and progressively reducing the reliance on fossil fuels. Green hydrogen is produced using renewable energy and has the potential to play a key role in such low carbon and self-reliant economic pathways. The initial outlay for the mission will be 19,744 crore, including an outlay of 17,490 crore for the SAI program, 1,466 crore for pilot projects, 400 crore for R&D, and 388 crore towards other mission components. Green hydrogen is produced by the process of electrolysis, where water is split into hydrogen and oxygen using electricity generated from renewable source like solar, wind, or hydropower. This process results in a clean and emission-free fuel that has immense potential to replace fossil fuels and reduce carbon emissions. Another method of producing green hydrogen is from biomass, which involves the gasification of biomass to produce hydrogen. Both these production methods are clean and sustainable, making green hydrogen an attractive option for the transition to a low-carbon economy. Green hydrogen can enable utilization of domestically abundant renewable energy sources across regions, seasons, and sectors, feeding multiple usage streams, either as a fuel or as an industrial feedstock. It can directly replace fossil fuel-derived feedstocks in petroleum refining, fertilizer production, and steel manufacturing. Hydrogen-fueled long-haul automobiles and marine vessels can enable decarbonization of the mobility sector. Green hydrogen can be particularly useful as a versatile energy carrier for meeting energy requirements of remote geographies, including islands, in a sustainable manner. The green hydrogen pathway can be a key enabler for India's aspirations of building a low-carbon and self-reliant economy. It was therefore an opportune moment for India to launch the National Green Hydrogen Mission to scale up green hydrogen production and utilization across multiple sectors and align
with global trends in technology, applications, policy, and regulation. The Ministry of New and Renewable Energy will be responsible for the overall coordination for implementation of the mission. Ministry of Power will implement policies and regulations to ensure delivery of renewable energy for green hydrogen production at least possible costs. The green hydrogen, green ammonia will become feedstock instead of coke. You will not have to import coke because you have so much of renewable energy. You will be able to make green hydrogen cheap and export green hydrogen. Everybody will need green hydrogen because everybody is going to decarbonize. Everybody is saying that I will get to net zero in year so and so year. You need green hydrogen. Green hydrogen can play a pivotal role in decarbonizing the hard-to-abate sectors like petrochemicals, steel, and cement, where the gas emission is very high. Well, the government has adopted a coordinated approach. And how? Let's find out. Ministry of Petroleum and Natural Gas will facilitate uptake of green hydrogen in refineries and city gas distribution through both public sector entities and private sector. Ministry of Chemicals and Fertilizers will encourage adoption of indigenous green ammonia-based fertilizers for progressively replacing imports of fertilizers and fossil fuel-based feedstocks. Ministry of Road Transport and Highways will enable adoption of green hydrogen in the transport sector through regulations, standards and codes, primarily for heavy commercial vehicles and long-haul operations. Ministry of Steel will drive adoption of green hydrogen in the steel sector. It will identify and facilitate pilot projects for use of green hydrogen in steel production and undertake policy measures to accelerate commercial production of green steel. Ministry of Ports, Shipping and Waterways will play a crucial role in establishing India's export capabilities for green hydrogen and its derivatives. It will facilitate development of the required infrastructure, including storage bunkers, port operations equipment, and refueling facilities. Ministry of Railways will work on transitioning towards adoption of green hydrogen in their operations in view of its ambitious plans to reduce the carbon footprint. Ministry of Commerce and Industry will encourage investments, facilitate ease of doing business, and implement specific industrial and trade policy measures for low-cost production. India will not be a country who is going to import energy, but India will be the country who is going to export energy. So that is the future of the hydrogen. I think the movement forward, no matter which way you look at it, India has done well on availability, affordability by and large, and the sustainability front. The overarching objective of the mission is to make India the global hub for production, usage, and export of green hydrogen and its derivatives. This will contribute to India's aim to become Atmanirbhar or self-reliant through clean energy and serve as an inspiration to global clean energy transition. The mission will lead to significant decarbonization of the economy, reduce dependence on fossil fuel imports, and enable India to assume technology and market leadership in green hydrogen. The mission also aims to make India a leader in technology and manufacturing of electrolyzers and other enabling technologies for green hydrogen. In the initial stage, two distinct financial incentive mechanisms are proposed with an outlay of 17,490 crore up to 2029-30. This includes incentive for manufacturing of electrolyzers and incentive for production of green hydrogen. Depending on the markets and technology development, specific incentive schemes and programs will continue to evolve as the mission progresses. Well, viewers, let's get to the heart of green hydrogen, the electrolyzers, where water is split into hydrogen and oxygen. But how do they function? Let's find out. So please help us understand the functioning of electrolyzers. So an electrolyzer is a device which breaks water whose composition is H2O into hydrogen and oxygen. Here what we see is the electrolyzer cell, which is connected through electricity. And also here we are feeding water into the electrolyzer cell. This water, which is hydrogen, combination of hydrogen and oxygen, gets split into the electrolyzer cell into its constituents, hydrogen and oxygen, and we collect hydrogen gas into this balloon. In hydrogen, we've started actually, I would say, as at par with the rest of the world. We launched our mission early this year in January, of course.
And our target is to achieve a production capacity of 5 million metric tons per annum by 2030, which is just 7 years from now. And again, like our renewable energy target, this is some target that we have is ambitious, but we are also very certain of reaching it. The reason is that we have set very, a lot of milestones and specific time-bound program to achieve that. For example, we have a huge incentive scheme, which is 17,500 crore, which will incentivize the green hydrogen producers. It will incentivize production, manufacturing of electrolyzers in India. In fact, the first bids are just closing right now. जब तक इसकी खपत नहीं बढ़ेगी, जब तक इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, ये कीमतें नीचे नहीं आएंगी। तो इसी संदर्भ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी में एक 10 KTA का एक प्लांट लगाने जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का। इसी तरह से हमारे जो 11 रिफाइनरीज हैं, सभी जगह हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लगाएंगे और लगभग आधी खपत हाइड्रोजन की जो हम कर रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन से आएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हाइड्रोजन की खपत बढ़ेगी, इसके दाम भी नीचे आएंगे और जब दाम नीचे आएंगे तो ये और पॉपुलराइज होगा। और प्रधानमंत्री का जो एक मिशन है, जो विजन है कि इंडिया एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बने जिसमें एक्सपोर्ट भी हो, ये पूरा उनका विजन साकार हुआ। Green hydrogen or ammonia manufacturers may purchase renewable energy from the power exchange or set up renewable energy capacity themselves or through any other developer anywhere. Open access will be granted within 15 days of receipt of application. The green hydrogen manufacturer can bank his unconsumed renewable power up to 30 days with distribution company and take it back when required. Distribution licensees can also procure and supply renewable energy to the manufacturers of green hydrogen in their states at concessional prices, which will only include the cost of procurement, wheeling charges, and a small margin as determined by the State Commission. Waiver of interstate transmission charges for a period of 25 years will be allowed to the manufacturers of green hydrogen and green ammonia for the projects commissioned before 30th June 2025. The manufacturers of green hydrogen and the renewable energy plant shall be given connectivity to the grid on priority basis to avoid any procedural delays. The benefit of renewable purchase obligation will be granted incentive to the hydrogen manufacturer and the distribution licensee for consumption of renewable power. To ensure ease of doing business, a single portal for carrying out all the activities, including statutory clearances in a time-bound manner, will be set up by MNRE. The production of green hydrogen in India presents a multitude of advantages that align seamlessly with the nation's aspirations for sustainable development, bolstered energy security, and consensuous environmental conservation. In the recent years, pilot projects have been undertaken in India for production of green hydrogen through electrolysis of water, using renewable electricity, and from biomass through thermochemical and biochemical routes. The mission aims to develop and scale up green hydrogen production technology and make it affordable and widely accessible. The cost of electrolyzers and input renewable energy are two major components of green hydrogen production cost. The costs of capital, supply and treatment of water, storage, distribution, conversion of hydrogen to suitable derivatives, and enabling infrastructure would also contribute significantly to the final delivered cost of green hydrogen for any particular application. The mission seeks to undertake the necessary steps to enable cost reduction in all these aspects. Around 500 million tons of green hydrogen will be needed to reach zero emissions by 2050. Putting that in other terms, that's the equivalent of 6 billion acres of trees being planted. We anticipate that 130 billion US dollars will be spent on green hydrogen through 2030. India has both the potential and the ambition to be a key driving force in the green hydrogen transition, given its highly skilled workforce, strong manufacturing basis, and deep technology in the green hydrogen areas. Well, now that we've produced hydrogen, how do we convert it into energy that can be used in the entire mobility spectrum?
from powering your cars to the buses to airplanes to ships? Well, the answer is hydrogen fuel cell. Let's understand its function. Sir, help us understand the function of hydrogen fuel cell. So when we have produced hydrogen, now that hydrogen, it has to be used in the mobility sector, we have to compress it and store on board on the vehicle. Now, once that hydrogen has been stored on board, we can use that hydrogen to power any vehicle. Here in this fuel cell, we are not combusting or burning hydrogen. We are directly getting the energy from the hydrogen in the form of electricity. And the fuel cell is a device which gets the hydrogen as an incoming fuel and it converts it into electricity. And the exhaust is absolutely pure water. Considering the renewable energy potential and the enabling framework proposed under the mission, India's green hydrogen production costs are expected to be among the lowest in the world. A global demand of over 100 million metric tons of green hydrogen and its derivatives like green ammonia is expected to emerge by 2030. Many countries are likely to rely on imports due to constraints on land and renewable resources required to produce green hydrogen domestically. Aiming at about 10% of the global market, India can potentially export about 10 million metric tons green hydrogen. From being an element in the periodic table, hydrogen became the mission for my life. It was in 2009 when I embarked on this journey of Swadeshi Urja for a Swavalambi Bharat, to bring energy independence to India, to bring energy to the farmers of our country, to bring energy to the rural hinterlands of the country. And this took me through a journey of building India's first homegrown electrolyzer and fuel cell company. And 14 years now, we are strong and we are setting up large-scale projects to become world leaders. The mission will also identify and develop regions capable of supporting large-scale production or utilization of green hydrogen as green hydrogen hubs. Development of necessary infrastructure for such hubs will be supported under the mission. It is planned to set up at least 2 such green hydrogen hubs in the initial phase. A public-private partnership framework for R&D will be facilitated under the mission. The framework will entail creation of a dedicated R&D fund with contributions from industry and respective government institutions. These institutions will pool resources to build a comprehensive, goal-oriented research and innovation program in collaboration with the private sector. 2030, India will be greatly in a leadership position across the world. And while all the developed nations are working on various technologies to advance the whole these programs, and they're very optimistic looking at 2030s and 35. But I'm pretty sure India will be leading this whole green hydrogen race, and as well as exporting these green molecules to the world. In 2020, India's hydrogen demand stood at 6 million tons per year. It is estimated that by 2030, the hydrogen costs will be down by 50%. The demand for hydrogen is expected to see a 5-fold jump to 28 million tons by 2050, whereas 80% of the demand is expected to be green in nature. Some of the prominent industrial mammoths plan to foray into green hydrogen space. India has also declared its ambition to become an exporter of hydrogen to Japan, South Korea, and Europe. Infrastructure development, including port development in Kandla, Tuticorin, Gopalpur, Paradeep, etc., is actively underway to facilitate exports. What sets India apart is the best wind and solar resource, coupled with the government's tangible commitment, evidenced by these budgetary allocations, swift policy implementation, and fund deployment through bids. India is at a critical juncture in terms of its energy landscape, and green hydrogen has a critical role to play to make the nation energy independent. This transition can be synergistic with the scale, ambition, and economic competitiveness of its renewable energy. Unlike fossil fuels, which have resource and geography constraints, green hydrogen can be produced anywhere in India, as it is blessed with the ample renewable potential. This will enable the emergence of an energy carrier that is domestically produced, reducing the dependence on imports for key energy commodities
like natural gas and petroleum. Hydrogen can be an energy molecule that is truly made in India, that can contribute to country's energy security and long-term economic competitiveness. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. With camera person Junaid and camera assistant Lavkush, with hopes of a greener future, I'm Kriti Mishra, signing off for Sunset Television.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, साध्वी निरंजन ज्योति।
माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभापति पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 3, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री नित्यानंद राय। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित अपने नाम के सामने जो दस्तावेज है उसको सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, श्री भागवत कराड़। With your kind permission, on behalf of my colleague, Sri Pankaj Ji Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 5 in the revised list of business for today. Item number 6, Srimati Shobha Karandave. Shown at serial number 6 of the revised list of business on Lok Sabha for today on the table of the House. Item number 7, Sri Kailash Chaudhary जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 7 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8, श्री BL वर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, श्री अजय कुमार जी। आज कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, श्रीमती प्रतिमा भौनिक जी। Yes, sir, with your kind permission, I lay the papers on the table of the House mentioned at serial number 10 of today's revised list of business on behalf of Susri Pratima Bhumik, my colleague Minister Social Justice and Empowerment, both English and Hindi versions, sir. Item number 11, Sri Viveshwar Tutu ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in today's revised list of business at serial number 11 on the table of the House. Thank you. Item number 12, Dr. L. Mathurang. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of the business. Thank you. Item number 13, Sri निषेधन प्रमाणीय। महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 13 पर मेरा नाम के आगे रखे गए दस्तावेज को सदन की पटल पर रखता हूं। अब आप अपने जगह पे खड़े हो जाओ, रुक जाओ जरा। आइटम नंबर 13A, श्री भागवत कराड़ जी। Speaker, sir, on behalf of my senior colleague, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, I rise to lay the following notifications. Number 1, notification 41/2023, Central Excise published in Gazette of India dated 18th December 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the notification number 18/2022, Central Excise dated the 19th July 2022, reducing the special additional excise duty on production of petroleum crude from rupees 5,000 metric tons to rupees 1,300 metric tons, and increase the special additional excise duty from nil per liter to rupees 1 per liter on export of ATF, that is aviation turbine fuel. Notification number 2, number 42/2023, Central Excise published in Gazette of India dated 18th December 2023, together with an explanatory memorandum making
certain amendments in the notification number 4/2022 Central Excise dated the 30th June 2022, reducing the special additional excise duty from rupees 1 per liter to rupees 50 paisa per liter on export of diesel. Thank you. Atom number 14 माननीय महासचिव जी. Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 18th December 2023 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reorganization, Second Amendment Bill 2023 and the Government of Union Territories Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुसूची संबंधित समिति ने 18 दिसंबर 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने 12वें प्रतिवेदन में सिफारिशें की है. प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए. क्या सभा की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की अनुमति प्रदान की करती है? सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा. 16 सुनील कुमार सिंह. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 16 पर सूचीबद्ध याचिका समिति का 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, 58वां, 59वां, 60वां और 61वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी का प्रस्तुत करता हूं. आइटम नंबर 17 करेन मुर्ग. Sir. Thank you, Honorable Chairperson, sir. With your kind permission, I beg to present the 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, and 97th reports, Hindi and English version, of the Committee on Government Assurances as listed against my name at serial number 17 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 18, Sri PC Gaddi Govardhan. मैं आज की कार्यसूची क्रम संख्या पर अपने नाम के समूह की यथा सूची संबद्ध देश के पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का फैलना और इससे संबंधित मुद्दे विषय पर कृषि, पशुपालन और खाद्य संस्करण संबंधी स्थायी समिति के 66वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं. आइटम नंबर 90 भी आप कर रहे. महोदय, मैं आज की कार्यसूची क्रम संख्या पर अपने नाम के समूह तथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य संस्करण संबंधी स्थायी समिति के 50वें, 60वें, 61वें, 63वें, 64वें और 65वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूं. आइटम नंबर 20 श्री जगदम्बा पाल जी. Sir, I wish to present a copy of each of the following three reports, Hindi and English version. 39th report on action taken by the government, and 40th report on action taken by the government and observation recommendation, and 41st report on the subject bioenergy and based energy recovery of energy from Aadhan of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. Item number 21 श्री संजय सेठ. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 92वां और 53वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं. Item number 22 श्री मितेश रमेश भाई पटेल.
Thank you, Honorable Chairperson, sir. I beg to present the 37 and 38 reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distributions as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 23, Sri Satyadev Pachori. संख्या 23 पर मेरे नाम के संपुक्त यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2023 और 2024 की गई कार्रवाई विवरण का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 24. महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के संपुक्त यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 45वां, 46वां, 47वां, 48वां और 79वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 25, Dr. Mahesh Sharma ji. Respected sir, I rise to lay on the table of the following reports in English and Hindi of the Standing Committee on Health and Family Welfare. 150th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in 137 report on the vaccine development, distribution, management and mitigation of pandemic COVID-19 and 151st report on implementation of Ayushman Bharat. Item number 26, Sadhvi Niranjan Jyoti ji. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग संबंधी स्थायी समिति के द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति वर्तमान स्थिति पर सदन के पटल पर एक वक्तव्य प्रस्तुत करती हूँ। Item number 27, Sri Vishweshwar Tattu ji. With your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 20th report of the Standing Committee on Water Resources on demands for grants 2023-24 pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, both in Hindi and English on the table of the House. Thank you. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। माननीय मंत्री जी, श्री आइटम नंबर 29, माननीय मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Act 2011 be taken into consideration. बिल के बारे में चर्चा होगी। श्री सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस बिल के बारे थोड़ी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना चाहूंगा। 1947 में दिल्ली शहर की जो आबादी थी, जनसंख्या थी, वो 8 लाख थी। जब हमारा पहला सेंसस हुआ सभापति महोदय 1951 में, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो दिल्ली की जो जनसंख्या है 8 लाख से चढ़ के 17,45,000 के करीब पहुंच गई। Sir, there was a massive transfer, demographic shift of population to Delhi as a result of the partition. उसके बाद सर दिल्ली की आबादी बढ़ती गई। 1991 में दिल्ली की जनसंख्या 94.2 लाख के करीब थी। 2001 में ये 1,38,00,000 हुई।
और जो हमारा पिछला लास्ट लेटेस्ट सेंसस है सर 2011 का, उसके हिसाब से ये 1.6 करोड़ है सर। क्योंकि सेंसस में थोड़ी देरी हो गई महामारी के कारण, और जब हमारी सेंसस फिगर्स अवेलेबल होंगी अगले एक साल के अंदर, तो लग सकता है 2 करोड़ नहीं, मैं तो समझता हूं 2 करोड़ से ऊपर ही होगी और 2.5 करोड़ के आसपास हो सकती है। और आने वाले समय में अगले 12-13 वर्ष में जो हमारे सरकारी एस्टिमेट्स हैं, ये जनसंख्या जो है दिल्ली की, ये by till 2036 it could even reach between 2.5 crores and 3 crores sir. Delhi ki, I'm presenting a bill sir, and the situation is that Delhi in many ways is a sui generis situation. It is both the capital city of Delhi of India, it is also a big cosmopolitan city, and it is one of the major engines of growth insofar as economic activity is concerned, sir. And sir, what has happened, sir, over a period of time is that because there has been a large influx of populations from rural areas, semi-rural areas, smaller tier 2 and 3 cities into Delhi, there has been a large, fairly substantial amount of unauthorized building activity. There have been encroachments, resulting in a situation that by 2006, on account of directives from the Apex Court, Delhi High Court and the Supreme Court, that a process of sealing and demolitions commenced. The then government in 2006 deemed it fit to bring a law which would provide protection against this sealing and demolition, etc. Sir, between 2006 and 2011, these laws were passed on an annual basis. These problems of encroachment on public land, growth of slums and unauthorized colonies, commercialization of residential areas, there were attempts made by previous governments, sir, to deal with these issues. And I mentioned specifically by the governments in 1961, 1977, 2000, 2008, 2012. But these attempts, considering the nature of the problem and the extent of the problem, these were small, modest attempts, and the problem remained largely unaddressed. Sir, I must say, and I must introduce a word of caution here, issues relating to the growth of slums and unauthorized colonies, or for that matter, encroachments, cannot be dealt through inhuman orders of mass demolition and sealings. Therefore, the then government in 2006 thought it fit to bring in a law to provide protection against such activities for 1 year. 2006 और 2011 के बीच में ये protection year by year this house approved them. From 2011, sir, 3-year extensions were sought. Sir, we were hoping that the earlier government, that the governments of the day, they would address the issue of unauthorized colonies in a systematic way. Because when influx of populations took place, large number of people came in for a variety of reasons, maybe because of the poverty of our policies, people started just occupying available land, cutting colonies, and making those available. When we approached the government of the National Capital Territory of Delhi, we were told इस पे काम हो रहा है, और हम इसी विश्वास में रहे 2014 के बाद में. पर जब हमें लगा और हमें बताया गया 2019 में कि अभी जो सर्वेस करवाने थे उनको, दिल्ली की सरकार को, और ये समस्या जो है कानून में पॉलिटिकली ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, पर जब हमें 2019 में ये बताया गया कि इनको 2 साल और लगेंगे ये वेरिफिकेशन और काम कंप्लीट करने में, उस समय सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और यूनियन कैबिनेट ने
23 अक्टूबर 2019 को ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया और एक नई स्कीम हम लाए, प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना, पीएम उदय। सर 2019 में हम ये कानून लाए और इसके तहत कुछ काम शुरू हुआ, पर ऑलमोस्ट इमीडिएटली वी हैड टू फेस द पेंडेमिक। मार्च 2020 से लॉकडाउन 20 और 21 तक वो रहा। सर इस समय जो हमने स्कीम लाई है उस पे जो काम हुआ है, हमारी ये असेसमेंट है दैट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो जनसंख्या हमारे भाई बहन रहते हैं वो 40 और 50 लाख के बीच में होने चाहिए। 40 लाख अगर हमारी जनसंख्या है वहां पे, तो रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए 8 से 10 लाख के बीच में। अभी तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुई हैं। Around 1,17,340 applications, households have been received. Authorization, conveyance deeds have been issued to 20,881 households. So clearly more work needs to be done. हमने इसके लिए पीएम उदय मित्र एक स्कीम बनाई है। पहले हर हफ्ते हमारे यहाँ 200 के करीब डोर टू डोर एफर्ट से कन्वेंस डीड ऑथराइजेशन स्लिप्स इशू हो रहे हैं। उसके कारण अब 200 से हमने उसकी पेस बढ़ा के 350 हो रहे हैं पर मंथ। डेवलपमेंट नॉर्म्स required for unauthorized colonies under the master plan of 2021 have also been notified in March 2022, and we expect this to trigger development in the colonies. Under in situ rehabilitation of JJ clusters, 675 JJ clusters in Delhi, 375 are with the DDA, और जो in situ slum rehabilitation projects हैं, कालका जी extension has been completed, 3,024 EWF flats have been handed over. 2 और colonies हैं सभापति महोदय जी, जेलरवाला बाग, अशोक विहार, कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर. These are in various stages of construction completion. Very soon दिल्ली में CLSS वर्टिकल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके तहत कोई 30,000 बेनिफिशरीज हैं. They have availed of loans of about 693 crores as interest subsidy. Sir, जो प्रोटेक्शन हमें इस लॉ से मिलती है, which is available till 31st December, we clearly need to extend that for another 3 years, because otherwise the vulnerable populations of Delhi will be, the population of Delhi which is vulnerable would be liable for sealing, demolitions and displacements. In addition, sir, the final stages of notifying the Master Plan 2041 has been reached. The DDA, MCD are also required to adopt measures to finalize norms, policy guidelines, feasible strategies for making orderly arrangements to deal with the problem of encroachments and unauthorized colonies. ये सब कदम उठाए जा रहे हैं. मेरा मंत्रालय सर, Ministry of Housing and Urban Affairs, we have been in dialogue with the stakeholders to monitor the progress in different actions taken under the 2011 Act. इसलिए I come before the House, sir, to seek approval to extend this protection by another 3 years, that is from 1st January of 2024 till 31st December of 2026. Sir, I submit and I place this bill for approval by the House, sir. Thank you. श्री रमेश बिदुड़ी जी. अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जो माननीय मंत्री जी लेकर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40 लाख लोगों की जो चिंता की है, जो पिछले 25-30 साल से एक तलवार उनके ऊपर लटका रहा करती थी, उससे निजात दिलाने के लिए 2041 मास्टर प्लान जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए उन लोगों को ये सुरक्षा प्रदान देने के लिए नेशनल कैपिटल लॉ स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023, इसके बारे में बोलना चाहता हूं. मैं इसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को भी और दिल्ली वासियों को भी, कि ये केंद्र सरकार है हरजीत पुरी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के डायरेक्शन से जो कहा है पीएम उदय योजना के माध्यम से, तो लगभग कुछ जो 2-2.5 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक ले लिया है.
कुछ लोगों को ये लगने लगा है मोदी साहब जो कहते हो तो गारंटी पूरी होती है, वो लापरवाही में रजिस्ट्री नहीं करा रहे, परंतु उसके अलावा भी दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ रुपया है दिल्ली सरकार का, और केंद्र सरकार ने निगम के माध्यम से, डीडीए के माध्यम से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया पिछले 2.5-3 साल में दिल्ली के विकास के लिए खर्च किया। जैसे अमृत योजना लेकर आई, जो केंद्र से बजट जाता है, कॉलोनियों में सीवेज डलती है, ट्रंक नाले बनते हैं, उसमें 802 करोड़ रुपया की 44 योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को कि जब हम इनके पास जाते हैं योजनाओं को लेकर, ये तुरंत सैंक्शन करने के बाद दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं। उसमें 5,83,000 जो लाइटें थी जिनमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होती थी, ऐसी एलईडी लाइट लगाने का काम हुआ है। फिर अमृत 2 लेकर आया हमारा शहरी विकास मंत्रालय, उस अमृत 2 के अंदर 2,02,885 करोड़ रुपया, जिनमें 38 परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें जलाशयों का भी ब्यूटिफिकेशन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर लोकसभा में ऐसे 75 जलाशय होने चाहिए जिनमें पानी का वाटर लेवल बढ़े और जिनमें वातावरण सूक्ष्म रहे। हमारे जौनापुर भीम कॉलोनी है, उसके अंदर भी इस प्रकार से जलाशय का जो निर्माण हुआ, और 3 निर्माण हुए, वो केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में भी 216.61 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें से 28,526 लोगों के लिए ओपन डेफिकेशन से बचने के लिए सीटीपीटी ऐसी शौचालय का निर्माण दिल्ली राजधानी के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कराया गया है। 107 वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट लोगों लगाने का काम वो केंद्र सरकार की इस योजना से डीडी और एमसीडी के माध्यम से हुआ है। 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हैं, जो एक आनंदमयी मार्ग पर माननीय गृह मंत्री जिसका उद्घाटन करने गए थे। 342 करोड़ से जो गार्बेज निकलता है दुनिया भर का, उससे बिजली बनाने का काम, ये 5 प्रोजेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर लगाए। 51 एसटीपी प्लांट लगे हैं सर, जो 21,563 एमएलडी कचरे को कंज्यूम करते हैं और उसको काम को कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही 410 करोड़ रुपया, जिनमें प्रमुख रूप से ये जो अनाथ आश्रय जो बने हुए हैं, रात को रेंट शेल्टर वगैरह जो बनाते हैं गरीबों के लिए, जो 216 410 करोड़ की लागत से वो भी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से। वरना लोगों को, बाहर के लोग आते हैं बसें में, लोगों को लगता होगा कि ये सब विकास के कार्य हो रहे तो कैसे हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केंद्र सरकार की नहीं होती है। स्वनिधि योजना की मैं जानकारी दे दूं, रेहड़ी पटरी खोमचा लगाने वाले गरीब आदमी, चाय की दुकान, ब्रेड की दुकान लगाने वाले, जिनका कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पीएम साहब ब्रेड पकौड़े की दुकान नौजवानों को खुलवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 199 करोड़ रुपए के 1.70 लाख ऋण प्रदान किए गए कि लोग गांवों से निकल कर आते हैं शहरों की तरफ। वो शहरों में वो लोग मद्रास, कलकत्ता, बंबई, हर जगह देश में जाते, लेकिन दिल्ली में भी लोग रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगभग 73%, बेंगलोर में भी इस प्रकार के लोन की व्यवस्था है। दिल्ली में मैं इस बात के लिए फिर बधाई दूंगा पूरे शहरी विकास मंत्रालय को कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने 73% ऋण जो हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं उनको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा। बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि वो कैंप लगाकर और 73% ऋण वितरण करके दिल्ली शहर 9वें स्थान पर है उस स्वनिधि योजना में लोन देने के लिए। इसी प्रकार से सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक तरफ तो शीश महल बनकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ जो 70 गारंटियां दी थी उसमें 56 नंबर गारंटी में दिल्ली के एक बौने दुर्योधन साहब, उन्होंने कहा था मैं सबको पक्के मकान झुग्गी झोपड़ी में दूंगा। उन्होंने तो प्रयास नहीं किया। कोविड में भी वो अपना 50 करोड़ का शीश महल बनाते रहे, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसी रणनीति के तहत 7 साल से अटके लटके पड़े वो फ्लैट थे गोविंदपुरी के अंदर, भूमिहीन कैंप के निवासियों को 3024 फ्लैट बनाकर उनको मालिकाना हक देने का दिल्ली में काम किया। जो प्रधानमंत्री जी का 2047 विकसित भारत का संकल्प है कि 2027 तक देश के हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में की गई है। इसी प्रकार से 692 करोड़ रुपए होम लोन पर सब्सिडी देने का काम दिल्ली वासियों को 29,976 परिवारों को वो सब्सिडी मिली है 2.5 लाख रुपए से लेकर और 3.5 लाख रुपए की। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हर किसी गरीब का अपना मकान हो। इसी प्रकार से जो गरीब परिवार बढ़ जाते हैं सर, परिवार बड़े हो जाते हैं, 2 बच्चे, दोनों की शादी करनी है, एफआर बढ़ाना है अपने मकान का, प्लॉट का 200 का 250 गज, उस एफआर का जो शुल्क था 2018 में उसको अधिसूचित करके हमारी सरकार ने
और जो AB श्रेणी के लोगों का डेवलपमेंट चार्ज 18,160 रुपए होता था, उसको घटाकर मात्र 4,200 रुपए किया गया। इसी प्रकार से C और D श्रेणी में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो चार्ज होता था वो 7264 रुपए हुआ करता था, उसको घटाकर 1680 रुपए किया गया कि अपने परिवार के एक्सपेंशन में वो FR बढ़ाना चाहे तो उनको ज्यादा शुल्क सरकारों को नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो गरीब गांव और अनऑथराइज कॉलोनी में जे उनमें जनता फ्लैटों के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका EFGH श्रेणी थी, उनका 3632 रुपए हुआ करता था, उसको मात्र 840 रुपए किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। इसलिए पुनः मैं इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। सर, जहां तक मेट्रो की मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर 4th फेज की मेट्रो 2016 में चलनी थी। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक द्वेष के कारण दिल्ली के लोगों को जाम में मरे, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार में फिर पुनः धन्यवाद दूंगा हरदीप पुरी जी को। मैं बहुत इस बात के लिए इनको धन्यवाद दूंगा कि जब वो उस बात के NOC नहीं दे रहे थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर अपने हिस्से के पैसे नहीं देगा तो केंद्र सरकार अपने पैसे से मेट्रो लेकर आएगी। और 4th फेज की मेट्रो एरो सिटी की 19 किलोमीटर तुगलकाबाद से लेकर लालकुआ, तिगरी, खानपुर, कृष्णा पार्क, राजू पार्क, अम्बेडकर नगर, इग्नू कॉलोनी के रोड, सेदराजाब, वो मेट्रो रेल का काम आज 48% के करीब 52% कंप्लीट हो गया। 120 किलोमीटर वो मेट्रो चलाने का काम किया है। सर, ये दिल्ली से जुड़ा मामला, मेरा 2 मिनट मुझे और चाहूंगा मैं आपसे, केवल 2 मिनट। अब मैं इन कॉलोनियों की तरफ भी आना चाहता हूँ। सर, इन अनऑथराइज कॉलोनी के लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। जो उस समय 40-45 साल के लोग थे, बेचारे 50 साल के, वो तो चले गए। उनके बच्चे भी इस तंज को झेलते थे कि कब हमारे सर पे तलवार लटक जाए, हमारे खून पसीने की कीमत का पैसा पता नहीं कब बिल्डोजर चला जाए। 2019 में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM उदय योजना से उनको मालिकाना हक देने का प्रयास किया, जो आज हम बात करते हैं गारंटी की, माननीय सोनिया जी है नहीं, अभी प्रतिपक्ष की नेता है। 2008 में रामलीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक नौटंकी की और उन कॉलोनी को, RW के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। लेकिन 8 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कॉलोनी पास हो ही जाएंगी। लेकिन 13 तक उन कॉलोनियों की फिर सुधरी ली गई, केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर छोड़ दिए गए। 13 के बाद जब 13 में आए, फिर इसी प्रकार की नौटंकी की, कुछ RW के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया, जैसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन इस मुख्यमंत्री ने किया था दिल्ली विधानसभा में झूठा 18 में कि हम दिल्ली की सभी अनियमित कॉलोनियों को पास करना चाहते इलीगल तरीके से। तो इसीलिए जो अनऑथराइज कॉलोनी जो 2396 के करीब 1979 से लेकर 2015 तक बसी है सर, इन कॉलोनियों में जो रहने वाले 40 लाख लोग थे, सीवर, नाली, सड़क, इन मूलभूत सुविधा से परेशान थे। पहले कांग्रेस ने फ्रॉड किया सर, उसके बाद फ्रॉड आदमी पार्टी आई, इन कॉलोनियों के निवासियों के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने 2016 में चुनाव में आने से पहले इन्होंने फ्रॉड करके फिर एक नई बात बनानी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के तहत अगले 5 वर्षों तक, कांग्रेस ने जब उन्होंने कहा कुछ नहीं किया है, तो हम 13 में चुनाव में जाने के बाद जब आएंगे तो फाइल नंबर 1333 अनऑथराइज कॉलोनी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी 02012 549553, ये जानकारी आम नागरिक को होनी चाहिए सर कि कितनी फ्रॉड करने वाले लोग कैसे बैठे हैं। 895 अनियमित कॉलोनियों को पास करने का ढोंग रच दिया और इसी इंस्टीट्यूट केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉड मैनेजमेंट जो कंपनी है केजरीवाल की, इनकी जो स्थापना हुई, जिनके डीन केजरीवाल साहब हैं, इस डीन साहब ने 15 में 70 वादों में 56 नंबर पर, जो मैंने पहले बताया, 1 वर्ष के अंदर मैं कॉलोनियों को नियमित कर दूंगा। आज तक सर वो कॉलोनी नियमित नहीं हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा सर, इस पे इतनी मेहरबानी और 40 लोगों के पास कर दो। PM उदय योजना के लिए 2019 में हमने प्रोटेक्शन उनको दे दी। जिसका व्यक्ति का वहां प्लॉट है, एक कमरा बना हुआ है, उसका मकान बना हुआ, उसकी रजिस्ट्री डीडीए ने कर दी। लेकिन अब अगर मैं उसको बनाता हूं तो उसको अनऑथराइज माना जाता है और MCD और HM डिपार्टमेंट के लोग उनको बुक कर देते हैं और वहां अवैध तरीके से उगाही होती है। इस प्रोटेक्शन डेट को सर एक 30 सेकंड में सर, इस प्रोटेक्शन डेट को सर बढ़ाकर 2014 की बजाय इसको 2022 कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उस प्लॉट का मालिक तो बन गया, मैं उस कॉलोनी में रह रहा हूं, वही 1739 कॉलोनी का पार्ट है, लेकिन मकान मैंने 18 में बनाया, एक्सटेंड उसको किया है, तो वो मेरा अनऑथराइज है, उसको MCD बुक कर देती है और उसको डिमोलिशन करने पहुंच जाते हैं। यहाँ सुविधा शुल्क की मांग की जाती है
और हम जब बात करते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि कोर्ट की अदालत के आगे आदेश के खिलाफ ही सरकार ने इनको प्रोटेक्शन देने का 2014 के बाद में काम किया है। और जो ये अनऑथराइज कॉलोनी का उनको प्रोटेक्शन 2022 का अगर माननीय मंत्री इस पे विचार करेंगे, मैं इनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। ये उन गरीब लोगों की तरफ से मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है। और उन खाली प्लॉटों में जो 30-35% है, उन्हीं कॉलोनियों की सर मैं बात कर रहा हूँ 1739। मैं एक्सटेंशन की कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। विद इन दिस कॉलोनी जो प्लॉट पड़े हुए हैं उनको अगर सर 14, 15, 16 में जिसने बनाया है, फिर दोहराना चाहता हूँ, इस पर माननीय मंत्री जी जरूर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी नहीं, श्री प्रवेश वर्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी, और मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि ये बिल कल आना था, और अगर ये कल आ जाता तो हम यहाँ पे बोल नहीं पाते, क्योंकि सामने लोग शोर मचा रहे थे। आज ये बिल आया तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि हम इसके ऊपर में बोल पा रहे हैं, और ये दिल्ली की जनता इसको समझेगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया। और मैं प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि अभी जैसे बताया कि हमारे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है 9 साल से। ये 22-25 साल में आज तक इन्होंने दिल्ली की एक भी कॉलोनियों को पास नहीं किया। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में हम सारे सांसद मिलकर, दिल्ली के भाजपा के हमारे विधायक मिलकर गए और हमने मांग करी कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास करो, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख लोगों की जिंदगी के ऊपर जो हमेशा तलवार थी उसको हटाकर सारी कॉलोनियों को पास किया। मैं अभी ये सुन रहा था, कुछ सांसद कह रहे थे कि अभी दिल्ली का बिल आया तो आपको बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खाली दिल्ली के सांसदों के लिए नहीं, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, और भारत की राजधानी में सारे सांसद के जिलों के, उनके क्षेत्रवासी, उनके वोटर ये यहाँ पे दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं, और ये सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। तो ये बिल जो आया है ये सभी सांसदों के लिए है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं, और यहाँ पे झारखंड के लोग भी रहते हैं, कश्मीर के लोग भी रहते हैं। तो ये सभी सांसदों के लिए बिल है, तो सभी को आपको इसको समर्थन करना चाहिए। मैं केवल थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। ये जो बार बार कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी, ये अनऑथराइज कॉलोनी है क्या? अभी जैसे हरदीप पुरी जी कह रहे थे, हमारे मंत्री जी, हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 7 लाख थी, 8 लाख थी। उसके बाद में 2001 में हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन हो गई 1.5 करोड़, आज हो गई दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। अब आबादी बढ़ती जा रही थी, परिवार बढ़ते जा रहे थे, मगर जो दिल्ली के उस समय 50 साल पहले, 60 साल पहले दिल्ली में हमारे यहाँ पे जो सरकार होती थी, भारत की जो सरकार होती थी कांग्रेस की, या जो डिपार्टमेंट होता था डीडीए, कोई पॉलिसी नहीं है दिल्ली में। अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपका परिवार बढ़ गया तो आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरदीप पुरी जी का, भारत सरकार का, और जो हमारा विभाग है डीडीए उसका, कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है आप उसमें नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ताकि लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड में उसको कॉलोनी को पास करवाकर फिर वहां पर मकान बनाएं। तो वो अनऑथराइज नहीं बोला जाएगा, वो अधिकृत बोला जाएगा, ऑथराइज बोला जाएगा। ये जो अनाधिकृत वर्ड है, ये अगर किसी को खत्म करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका सौभाग्य है कि जो काम ये कांग्रेस 50, 60 साल के रूल में नहीं कर पाई, ये उनका सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो सारे काम, वो सारे पाप को धोने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों होना था, इसलिए ये काम हुआ और ये सारी कॉलोनियां पास हुई। सर, मैं एक बार अपने गांव में गया तो वहां पर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे की शादी होनी थी, जो है लड़की वाले देखने आए, तो उन्होंने पूछा आपकी कॉलोनी पास है क्या? उन्होंने कहा पास नहीं है।
तो रिश्ता टूट गया। अगर आज ये सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में शादियां होने लग गई हैं, विकास होने लग गया है, तो उसका श्रेय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। ये सारे अच्छे काम होने लग गए। सर, मैं अभी क्योंकि मनोज तिवारी जी नहीं है तो आप उनका समय भी मुझे ही दे दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर, ये कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं 60 साल 70 साल, और आज जब हम करने को आए तो आज भी ये चिल्लाते, आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज दिल्ली की कॉलोनियां पास हो रही हैं, वहां पे इनके रिश्तेदारों के भी प्लॉट होंगे, इनके एमएलए ने भी, इनके मंत्री ने भी प्लॉट काटे हैं, जो है कॉलोनियां काटी हैं। आज उसके भाव भी बढ़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पास किया, तो भी ये लोगों के पेट में दर्द होता है। और आज भी ये हमारे हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। हमारा काम नहीं था कॉलोनियां पास करना, ये काम था दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का, शीला दीक्षित जी का। क्योंकि उन्होंने कोई कॉलोनी पास नहीं करी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने सारी कॉलोनियां पास करी। मगर आज कॉलोनियां पास हो गई है, आज उनमें सीवर लाइन डालना है, पानी डालना है, बिजली डालना है। ये काम कौन करेगा? ये काम जो है दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल करेगा। मगर वो भी ये काम नहीं कर रहा। ये सारी कॉलोनियां पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहे। इसलिए मैं हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज भारत सरकार जो है इन कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, तो सीवर की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, और इनके टॉयलेट बनाने के लिए भी पैसे देती है। वहां की सारी सुविधाएं करने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है। सर, एक बार 1996 में हाई कोर्ट ने एक बार सारी कॉलोनियों को तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था। उस समय हमारी दिल्ली में सरकार थी, उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो हाई कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज जो है सरकारी वकील बहस नहीं करेगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बहस करूंगा। तब उन्होंने वहां पर बहस करी। उसके बाद में कोर्ट का ऑर्डर बदला। जो सारी कॉलोनियों के ऊपर में बुलडोजर चलने वाला था, अगर उसको बचाने का काम भी 1996 में किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सर, अभी परिवार बढ़ गए तो ये कॉलोनियां आज भी कट रही। मैं इसलिए हमारे मंत्री जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जो नया मास्टर प्लान बन रहा है 2041, सर कृपया उसके अंदर में जीडीए पॉलिसी जो आने वाली है और हमें सुनने में आ रहा है कि आएगी, उसको लागू किया जाए, और उसके साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाए। क्योंकि अगर ये पॉलिसी नहीं आएगी, सर आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में, मेरी लोकसभा में ऐसे ऐसे गांव की जमीनें जहां पर 2 करोड़ रुपया एकड़ में जमीन मिलती है, और उसी के 1 किलोमीटर दूर में गुड़गांव में चले जाओ तो वहां पर 20 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे अपना पॉलिसी है। हमारे दिल्ली में पॉलिसी नहीं है। तो दिल्ली में अफवाह ये चलती है कि सारी कॉलोनियों की जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को सारे बिल्डर ने खरीद लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। आज भी दिल्ली की 80% एग्रीकल्चर लैंड वो वहां के किसानों के पास है। इसलिए अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, सरकार लेके आएगी मास्टर प्लान में, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, और ये कॉलोनियां, नई कॉलोनियां कटने से बच जाएंगी और सारी अधिकृत कॉलोनियां ही आएंगी। तो मैं ये भी मंत्री जी से मैं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं मेरे दिल्ली के ग्रामीण वासियों की तरफ से कि सर कृपया जो मास्टर प्लान आएगा उसी में जीडीए पॉलिसी को, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आए, तो हमें जो है बहुत ज्यादा खुशी होगी। सर, अगर ये बिल आज जो हमारी सरकार स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेके आ रही है, सेकंड अमेंडमेंट, अगर आज ये नहीं आएगा तो क्या होगा? तो ये सारी कॉलोनियों के ऊपर में केजरीवाल वो अपना बुलडोजर भेज के चला देगा, ये सारे मकानों को तोड़ देगा। अगर ये मकानों को बचाने का काम आज हो रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। सर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज तक जैसे हमारी सरकार ने हजारों जो अंग्रेजों के टाइम के पुराने कानून थे उनको खत्म किया, आज भी 2 कानून दिल्ली में चलते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, और वो ये सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में चलते हैं। एक है सेक्शन 81 और एक है सेक्शन 33।
अब ये दो कानून क्या है? अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में जरा सी भी दीवार बना ली तो सरकार उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देती है। तो सर, आज तो दिल्ली के सारे गांव जो है अर्बनाइज हो गए। आज ये धाराओं का कोई लॉजिक नहीं है दिल्ली में। इसलिए मैं मेरी सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जिन्होंने ये जो नया मास्टर प्लान है उसमें रुचि ली है और यहाँ पे डीडीए के वीसी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि सेक्शन 81 को, सेक्शन 33 को, ये दोनों धाराओं को खत्म किया जाए और दिल्ली में जितने भी केस चल रहे हैं वो सबको खत्म किया जाए और सारी ग्राम सभा में वेस्ट की हुई जमीन वो हमारे दिल्ली के किसान भाइयों को वापस की जाए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किए और खासकर ये सारी अनाधिकृत कॉलोनियों में जो काम किए, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। सबसे पहले मैं बात करूं, एक अभी हमारे यहाँ पे अर्बन एक्सटेंशन रोड बनी, 8,000 करोड़ रुपए की रोड बनी है, सारी कॉलोनियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। अगर वो रोड बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम किया। उसके लिए मैं हमारे मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का और डीडीए का धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से रोड बनी। उसके साथ में अभी आपने सुना होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पे 28,000 करोड़ रुपए का ऐसा कन्वेंशन सेंटर सारी कॉलोनियों के बीच में बना है। तो वो कॉलोनियों में आज जो है विकास करने की बात कोई कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा करने की बात कर रहा है, तो वो हमारी सरकार कर रही है। सर, उसी के साथ में अभी रमेश जी ने भी बताया कि 6 लाख एलईडी लाइट लगवाई गई कॉलोनियों में और स्वच्छ भारत मिशन में अभी 1190 करोड़ रुपए दिए गए। उसी के साथ में स्वनिधि में अभी तक 2 लाख लोगों को ऋण मिला है, उससे वो अपना रोजगार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं दिल्ली में। सर, पीएम उदय योजना, ये ऐसी योजना है जो दिल्ली के ये सारे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक ऐसी स्कीम लेके आए कि एक ही झटके में उन्होंने दिल्ली के 50 लाख लोगों का जीवन को सुरक्षित कर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको स्वाभिमान दिया। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करता हूं और सारे डीडीए के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और ये बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इस बिल पर बोलने का समय दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। श्री राहुल शेवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा विधेयक 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से समर्थन करता हूं और साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, यह विधेयक अनधिकृत विकास की रक्षा के लिए प्रावधान की वैधता को अगले महीने की 1 तारीख से 3 और वर्षों के लिए विस्तार प्रदान करता है। अध्यक्ष जी, ये विधिवत है कि पिछले कई वर्षों में दिल्ली की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, आवास, वाणिज्यिक स्थान और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई गई है। मांग और आपूर्ति में अंतर के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, मलिन बस्तियों का विकास, अनधिकृत निर्माण आदि की समस्या पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या पिछले दशक से दुगनी हो गई है और भारत सरकार के सर्वे के 2011 के अनुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के शहर में आबादी क्रमशः 41%, 29%, 28% एंड 15% झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन झुग्गी बस्तियों में औसतन 5% लोग एक कमरे में 5 लोग एक कमरे में अपना गुजारा करते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 700 एकड़ में झुग्गी बस्तियां हैं और इनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 90% झुग्गियां अनियमित कॉलोनी के रूप में सरकारी जमीन पर है। अध्यक्ष जी, भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियों की संख्या महाराष्ट्र में है और मेरा जो संसदीय क्षेत्र धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो जो लोग झुग्गिया में रह रहे हैं उनकी संख्या 2001 में 52 मिलियन से बढ़कर 2011 में 65 मिलियन हो गई है और अब यह संख्या और भी बढ़ गई है। इस समस्या का हल ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष जी, सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती मांग के बीच अंतर ने
मलिन बस्तियों के गठन को प्रोत्साहित किया है। जब भी शहरी घरों की मांग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ियों के निवासी आमतौर पर सीमांत स्थानों से जैसे डंपिंग ग्राउंड में निवास करते हैं। अध्यक्ष जी, शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार का प्राथमिक कारण गांवों से शहरों की और लोगों का पलायन है। शहर अतिरिक्त आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं है, जो अंततः आवास की कमी, बेरोजगारी और मलिन बस्तियों के विकास जैसे कई समस्याओं का कारण बनी। इस समस्या निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने जरूरत है। अध्यक्ष जी, मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम है, जिन्हें आमतौर पर झुग्गी वासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहले की सरकारें शहरी गरीब झुग्गी वासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में शामिल करने में विफल हो गई है। इससे उनके जीवन स्तर में कई सुधार नहीं हुए और अभी भी झुग्गी बस्तियों में लोग रह रहे। अध्यक्ष जी, 3 साल का प्रस्तावित विस्तार संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल ये विधेयक केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सरदार हरदीप सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके ये विधेयक लाया हुआ है और एक साथ 3 साल का विस्तार देना बड़ी राहत है। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध संपत्तियों को सुरक्षित करने में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। व्यापारी संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार को इसकी मांग कर रहे थे। अध्यक्ष जी, ये विधेयक शहर में किसी भी कार्रवाई से उस समय तक जब तक सरकार दिल्ली मास्टर प्लान लेकर आएगी, जिसमें झुग्गियां, अनधिकृत कॉलोनियां, फार्म हाउस, गांव के आबादी क्षेत्र और अन्य मौजूदा भूमि नीति और विनिमय कमजोरियों की व्यवस्था के लिए एक रोड मैप देने की व्यवस्था करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं, जिसमें झुग्गी झोपड़ियां, क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियां जैसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपाय किए गए वगैरह। मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान जल्दी ही तैयार हो जाएगा, जिससे दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होगी और एक दिल्ली के एक विश्व स्तरीय शहर बनेगा। अध्यक्ष जी, विदेश घुसपैठी या झुग्गी झोपड़ी समस्याओं की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है। आज सभी बड़े शहरों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और झुग्गी झोपड़ियों की गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। Sabhapati Mahoday, I would like to start by thanking the honorable members who have spoken, Ramesh Biduri ji, Parvesh Verma ji, Rahul Sewale ji. Whilst lending their support to the bill that is before us, they have also made some suggestions. Many of these suggestions are already under consideration. Given the limitations of time, I will respond to the suggestions I've heard, and I would also, Mr. Chairman, sir, like to share through you with the honorable members my expectation of how the master plan, which as I said is at the stage of finalization, how that will affect not only those who are living in this so-called unauthorized colonies, for which we have already provided Malikana Haq, how we propose to take that forward. Also, Jahan Juggi Wahi Makan scheme, land pooling, which has been referred to by several members, and what has perhaps not been referred to specifically by members, honorable members, but I think which is at the back of everyone's mind, urban regeneration of old development colonies, because I think this is part of the largest thing. Sir, if today the population, when the census comes, is in the vicinity between 2 and 2.5 crores, my readings, sir, based on my experience of the last 6.5 years that I have been associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs and with issues relating to the development of Delhi, a city in which I was born, in which I grew up, a city which is rapidly changing. Sir, out of this population of between 2 and 2.5 crores, I believe, sir, 40 lakh people
will benefit from the Malikana Haq, the authorization of or dealing with unauthorized colonies. There are still some sections which were not covered in the original list, but which we had promised to sequentially take up after this process is complete. About 40 lakh there, sir. Jahan jugi, wahi makan. Another 10 lakh of our citizens, that makes it 50 lakh, sir. And land pooling, sir, when finalized, I think will cover something like 20,000 hectares in 138 sectors. Another 70 lakh people, I think, will benefit from that land pooling, which makes it 50 plus 70, 1 crore 20, and the other colonies which are due for redevelopment. So Delhi is not only a city which is growing in population, it's growing in economic strength, but it is also virtually being rebuilt, sir. Sir, my previous generation came here after 1947. They did the initial building. Today, the new parliament that we have the privilege of being in, the Central Vista, Bharat Mandapam, Yasho Bhumi, and if you see all around, there's redevelopment taking place at a massive scale. Sir, my colleague and friend Ramesh Biduri ji wanted the cutoff date raised from 2014 to 2022, if I heard him correctly. I would just like to tell him that this bill specifically seeks extension for the next 3 years. This extension will give us the cushion, the time cushion, and the flexibility to have wide-ranging consultations on policy matters and guidelines for orderly development of the unauthorized colonies. I think my answer should encompass and is intended to encompass specific suggestions which have been made. Sir, Shri Parvesh Sahib Singh Verma ji mentioned the MPD 41. I've already taken the liberty of, in anticipation of saying something. As I mentioned earlier, sir, he said that GD and land pooling policy, I've already responded to that. The master plan is at a final stage of, I would say, consultation. It's way beyond that. I think it's at a stage of finalization now. And this policy, we have made a lot of progress in formulating this policy, and we will see that substantial benefits, I'm choosing my words carefully, sir, substantial benefits will accrue to the citizens of Delhi, all the stakeholders, those who are there, the Kisan Bhais who own the land, and all the others. We are now getting a more flexible approach to pooling so that little technicalities don't stand in the way, sir. Sir, I would once again thank my 3 colleagues who have spoken and all the others who will give support to this absolutely vital piece of legislation, because it will give us an opportunity to ensure that processes which were started 20, 30 years ago, and in 2006 in particular, we are able now to finalize in an orderly manner what will be required to be done under the master plan, also on all the other areas which flow from it, and also the provision of Malikana Haq to those who are living in those unauthorized colonies, increase the pace of registration, the issuance of conveyance deeds and authorization slips, and that we will be able to demonstrate to everyone. Ramesh ji said कि शायद उनको लगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई, पर मुझे पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स अभी पब्लिश हो गए हम पिछले वर्ष, और उसके साथ हम ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि जो पीपल हु गो इन फॉर full authorization, they can rebuild and they will also economically benefit. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी. श्री रमेश बिदुड़ी. माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, ये 1739 कॉलोनी जो छोड़ी गई, इसमें कुछ एफुलेंट के नाम से 69+3 कॉलोनी छोड़ी गई थी सर. उनका डेवलपमेंट कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा सर, उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है. वो भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो एफुलेंट कॉलोनियों को भी तुरंत उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें सर. आप वो हैं तो उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते, तो उनके बारे में माननीय मंत्री जी की क्या विचार है सर? मैंने सर, मेरा सभापति महोदय जी, मुझे लगा कि मैंने
शायद मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो जरा ज्यादा कंजर्वेटिव वो थे। मैंने ये भी कहा कि जो कॉलोनीज पहली लिस्ट में आ गई थी, हमने ये कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज को हम नहीं टेकअप करेंगे। हमने कहा कि सीक्वेंशियली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वो बहन भाई रहते हैं जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए। जैसे ये कंप्लीट होगा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो 69 है शायद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जहां रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे। ये सरकार की शुरू से यही पोजीशन रही है और आपके माध्यम से सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आई एम सेइंग दैट दीज विल आल्सो बी टेकन अप। और आई होप दिस अश्योर्स माय कॉलीग। आई नो ही हैज बीन लुकिंग टू री-हियर दैट आंसर फ्रॉम मी। मैं कई बार उनसे कह चुका हूं, पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूं। आई हैव नो हेजिटेशन इन रिपीटिंग दैट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सर। थैंक यू। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वाले के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बन गया। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र के विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव विधेयक को पारित किया जाए। I submit that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 30, केंद्रीय माल और सेवा कर। माननीय मंत्री जी। Move that the bill further to amend the Central Goods and Services Tax 2017 be taken into consideration. मंत्री जी कुछ कहेंगे? So thank you for giving me this opportunity. I'll just put the context in which this amendment is coming in. So as you know, GST subsumed 17 taxes and 13 cesses, and it sort of bridged all the states and enabled trade. The number of taxpayers registered in the GST has almost doubled to 1.4 crores. I'm quoting June 2023 figures. And when it started in 2017, we had only 67.83 lakh taxpayers under the GST. So GST is actually bringing in a lot of advantage to the economy. The tax incidence under the GST has also been lower to what it was before the GST was introduced. So the current features, some of the best features which I can highlight, are that the RBI report itself, while talking about the state finances as of January 2023, acknowledges that the northeastern states have been the biggest beneficiaries in the GST regime, and they have recorded a compound annual GST revenue growth rate of 27.5 since the implementation of the GST, as against 14.8 for all states. Almost all the GST Council's decisions have been through consensus. So this being the main feature, the need for the current amendment is something which I'd like to highlight. The section which is 109 of the Central Goods and Services
Tax Act 2017, that is the CGST Act, provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. The qualifications, the appointments, and the terms of conditions for service of the President of the Appellate Tribunal and the judicial and technical members are specified in Act 110, which is the Section 110 of the Act. And under the GST law, sir, the adjudicating orders are passed by the GST officers themselves from the center and from the state, depending on the jurisdictions allocated. Whilst appeals against the orders passed by the adjudicating officers lie with the first appellate authority, who is an officer within the tax administration itself, belonging to the respective central and the state tax officers. The second appeal against the order of the first appellate authority under the center as well as the state tax administration lies with the GSTAT, meaning GST Appellate Tribunal. This is the first forum, sir. The Appellate Tribunal is the first forum at which GST litigation process itself converges within the state. That is, appellate orders passed by the center and the state GST officers become a part of the same appellate forum. So earlier in 2019, sir, the GST Appellate Tribunal benches were notified. We went ahead by notifying the benches, but the same was challenged in the high courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition of 2018, in the case of Revenue Bar Association versus the Union of India, Honorable High Court of Madras held as follows, and I quote, "The number of expert members, therefore, cannot exceed the number of the judicial members on the bench," unquote. So the High Court, Madras, struck down the section 109 and 110 of the CGST Act 2017. In August 2021, the tribunals, this is a parallel development which I draw your attention to. In August 2021, the Tribunal Reforms Act 2021 was enacted, by which the qualification and the selection process was standardized for all tribunals. By that time, there was no GST tribunal. But as I said, it is a parallel development. In August 2021, the Tribunals Reforms Act was enacted, by which the qualification and the selection, the process itself was standardized for various tribunals. Given these developments, in its 47th meeting held on 28 and 29 June 2022 in Chandigarh, the GST Council discussed the changes required in provisions pertaining to the GST Appellate Tribunal in the GST laws so that it can be brought in conformity with the judgments of the court and in relation to the various aspects concerning all the tribunals. So in that meeting, the council had decided to constitute a GOM to look into the issues involved, which was constituted on 6th July 2022. The report of the GOM was placed before the GST Council in its 49th meeting dated 18th February 2023, and post-approval of the GST Council, the CGST Act was amended by the Finance Act of 2023, wherein sections 109 and section 110 of the said act was amended. As amended by the Finance Act 2023, the GST Appellate Tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are to be notified. The principal bench will be or shall be located in New Delhi and shall have one president, a judicial member, a technical member that is belonging to the center, and a technical member of the state. The state benches shall have two judicial members, a technical member center, and a technical member state. State benches have also been
already notified as of 14 September 2023. The qualifications of the president and members are also clearly notified. Thereafter, it was brought to the notice, and this is the important part of why this amendment is coming through. I've just set the background. The reason why this amendment is coming through is because it was brought to the notice of the ministry by the Honorable Chief Justice of India in his administrative side through the registrar of the court that the following aspects of the service terms were not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. I'll again try to draw the attention of the honorable members that the GST Appellate Tribunal is developing on its own parallelly to the tribunals, all other tribunals amendment acts which have happened. And now, by drawing the attention of the honorable of the ministry, the Honorable Chief Justice of India, in his administrative capacity, is trying to align the two. And therefore, the 2 points on which the Chief Justice of India drew our attention is that the maximum age limit for the post of the President of the Appellate Tribunal and members is 67 and 65 years in the CGST Act, which we had cleared. Under the Tribunal Reforms Act 2021, under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 and 67. Whereas what we brought in the CGST amendment was 67 and 65. Tribunal Reforms Act had 70 and 67 years respectively. The second point on which amendment became necessary is that the CGST did not have a provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the Tribunal Reforms Act, where these two were therefore taken up in the council and they were approved by the GST Council. Under the Tribunal Reform Act, the advocate with standing of 10 years at the bar is eligible to be appointed in the judicial as a judicial member. So these two particular and specific points which the Honorable Chief Justice of India highlighted, the issue of these two concerns were again placed before the GST Council in its 52nd meeting held on 7th October 2023, and the amendments to the section 110 of the CGST Act, aligning the provisions with the Tribunal Reforms Act, were approved by the Council. So, accordingly, the CGST Second Amendment Bill, which is what is now before us, has been introduced in the Parliament on 13th December 2023, bringing the provisions of section 109 and 110 of the CGST Act in line with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, once this Honorable House passes this amendment bill, post amendments, the process of selection of the President and the members would be initiated. Honorable Chief Justice of India has already consented to chair the Search cum Selection Committee and has nominated Senior Judge Justice Sanjeev Khanna to chair the Search cum Selection Committee for selection of members, both judicial and member technical, which is the center's technical member. So this, therefore, is before us, and I humbly seek the support of all the honorable members to have this passed. Thank you. श्री निशिकांत दुबे जी, आप वरिष्ठ संसद है, आपको भी इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा। सभापति महोदय, इस बिल पर अगर बोलना चाहते हैं तो मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी जी ने इस देश में 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन आजादी के बाद ये जीएसटी का था।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभापति महोदय लगातार इसके ऊपर चर्चा रही कि स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए, कुछ अधिकार सेंटर को दिए गए, लेकिन जो इकोनॉमी बढ़ती रही, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही, उसमें लोगों ने यह तय किया कि जो आम आदमी है वो सेंटर और स्टेट के टैक्स से इतना तबाह हो जाता है, टैक्स पर टैक्स इतना हो जाता है कि जब फाइनली वो कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका दाम इतना बढ़ जाता है जिसमें कि जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। 2014 में माननीय मोदी, और जब मैं ये कहता हूं तो कई एक लोगों को लगता है कि 2014 के पहले देश था ही नहीं, 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इसका इतिहास यह है सभापति महोदय कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो एक केलकर कमेटी बनी थी और केलकर कमेटी ने एक वैल्यू एडेड टैक्स जो है, एक प्रोपोजिशन जो है बढ़ाया था कि अब अपने को इकोनॉमी में ग्रूम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स की आवश्यकता है। वैल्यू एडेड टैक्स लागू हो गया, हमारी सरकार चली गई 2004 में, और 2006-07 के जिस फाइनेंस बिल की बात कर रही थी निर्मला सीतारामन जी, जिनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है कि 2027 उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। 2006-07 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे। 2006-07 से लेके 2014 तक 8 साल तक इनकी सरकार रही और 8 साल में ये केवल एक तकिया कलाम, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लगता रहा, और जब तक उनकी सरकार रही 2014 तक गरीब खत्म हो गया लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी नहीं लाए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, या उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था राज्यों का कि वो अपने टैक्स को जो है छोड़ने को तैयार हो, या एक फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह का जो है बातचीत हो। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, अरुण जेटली जी तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मोदी जी का जो नेतृत्व था, इतना मजबूत नेतृत्व था कि राज्यों को उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि गुजरात उस वक्त एक ऐसा राज्य था जो ये कहता था कि जीएसटी का जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्यमंत्री के नाते जो उनके अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर 2006-07 में ये एक बड़ा टैक्स जीएसटी लेकर आई। इसमें 37 टैक्स हैं सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्स हैं जो टैक्स जो है वो इसमें मर्ज किए गए। अब 37 प्रकार के टैक्स जो राज्य लगाते थे, कुछ टैक्स जो कुछ सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते। इसीलिए कंज्यूमर तक जब ये सामान पहुंचता है तो वो कंज्यूमर तक वो सस्ते में पहुंचता है, और इसी कारण से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो लेजिस्लेशन है जिसके लिए 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है जीएसटी की बनाई गई है, वो और भी महत्वपूर्ण है सर। इसमें क्या होता था कि जब आप भ्रष्टाचार की सरकार चलाते हैं तो उसमें आप जुडिशियरी को जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और सारा अधिकार आप अपने पास रखते हैं, जिसमें कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है सभी तरह के, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा आता है इस देश में कि कम से कम 100-150 ट्रिब्यूनल हो जाते। हमारी सरकार ने 2016-17 में यह तय किया कि इतने ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता नहीं है, और पोस्ट रिटायरमेंट हम बेनिफिट जो जजों को देते हैं वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब हम अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल का है कि 62 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, किसी का 67 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो सभी का बराबर होगा, सभी ट्रिब्यूनल के अधिकार बराबर होंगे, और टोटल मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जो कि इस सरकार ने एबॉलिश किए, जिसकी की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, जिसको कोई काम नहीं था।
केवल गाड़ी देना था, घोड़ा देना था, उसको मकान देना था, उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे। इस कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार की कई एक बातों को माना। तो इसमें जो दूसरा संशोधन है, जिसके लिए कि अभी बिल आने वाला है माननीय गृह मंत्री जी का, कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा, जिसमें कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जीएसटी चूंकि टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है, उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों को समझना, उसके पैसे को करना, क्योंकि यदि पैसा भारत सरकार की किटी में भी हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कारण से जब एपेलेट अथॉरिटी के बाद, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद ये केस हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो अनावश्यक जो है देरी हो जाती है और इस देरी के वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया इसके माध्यम से कि एक तो ट्रिब्यूनल को, जो ट्रिब्यूनल एक्ट था उस ट्रिब्यूनल एक्ट में ले आए कि जो सारे ट्रिब्यूनल हैं भारत सरकार के, वो सभी ट्रिब्यूनल में 70 साल और 67 साल का जो एक कैप है वो रहेगा। दूसरा जो सबसे बढ़िया काम किया, जो मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने अपने हाथ में, जो माननीय मंत्री महोदया ने अपने तकरीर में कहा कि हमने जस्टिस संजीव खन्ना जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो नंबर 2 जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका मेंबर कौन होगा। और इवन स्कोप ज्यादा वाइडर करने के लिए, जज से भी ज्यादा स्कोप वाइडर करने के लिए, जो लड़के बहुत ही तेज तर्रार हैं, पढ़ने में तेज हैं, जिनको टैक्स के बारे में अथॉरिटी है, उनका यदि 10 साल का अनुभव है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो है पुल इन्होंने तैयार किया। इसमें एक तो ये होगा कि जजमेंट बहुत आसानी से होगा, दूसरा हाई कोर्ट में जो लिटिगेशन फंसता है वो हाई कोर्ट का लिटिगेशन कम होगा, और तीसरा जो आम कंज्यूमर, अब उदासी जी बता रहे हैं कि 14,000 से ऊपर जो है केसेस हैं, तो ये सारे केसेस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाया है। देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका जो असर होगा बहुत बड़ा होगा। और जिस तरह से जीएसटी काम कर रही है, दो चीजों पर, जीएसटी काउंसिल जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और टेक्नोलॉजी जो जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके आधार पर जो माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि आज हम जीएसटी लाने के बाद राज्यों को भी कंपनसेट कर रहे हैं, टैक्स भी ज्यादा ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से एक पुल भी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, और इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार बड़ा काम कर रही है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, और मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जो भारत का नारा है वो कारगर हो रहा है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you for giving me the opportunity to speak on the important bill, that is the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. On behalf of Biju Janata Dal, I rise to support the bill. In the last 6 years, the GST ensured compliance simplification with uniform processes across the country. But more needs to be done. I will take this opportunity to highlight some of the concerns. Odisha government, led by visionary leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has already taken simplification measures pertaining to state government. The state cabinet has approved Odisha Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 that simplifies the provisions and provide certain facilities to taxpayers and tax authorities in the state. Provision has also been made for GST Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority. Subsequently, Odisha has registered a phenomenal growth rate of 100.77% in the state GST collection in November this year from November last year. Sir, coming back to the issues that I want to raise, full compensation to the state for loss of revenue on account of GST implementation is getting delayed unduly. State revenues have taken drastic fall due to pandemic. I urge upon the government to release the pending GST compensation to the states on time. The center's November 2021 notification to increase the goods and service tax GST on several textiles and apparel from 5% to 12% for items with a value slab of above rupees 1,000 is a big blow to the handloom sector. The handloom and craft sector is under
severe distress, as the average handloom's household income is only rupees 3,042 per month. I would request through you, sir, for a consideration to the proposal of flat 5% GST on all textile and apparel products. The GST Council has imposed 28% GST tax on full face value of bets placed on online gaming as opposed to gross gaming revenue. The decision was implemented from 1st October 2023 with a review after 6 months. A consequence of GST Council's decision is need to decide whether the amendment is clarificatory and therefore has a retrospective application, or whether it should be made effective only after 1st October 2023. This is important for estimating past period liabilities. Hence, a clarification is needed. Sir, India needs to simplify its tax system to ease the compliance burden on small and medium businesses. Simplifying tax rates would add to the MSMEs, make imports competitive, and improve exports prospects. GST on Kendu leaves has been increased from 5% to 18%. Central tax on Kendu leaf was earlier 0. Central government should place this matter in the GST Council and revise the rate to 5%. Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, on Wednesday announced a special package for the welfare of 8 lakh Kenduli pluckers and other persons engaged in the trade. Sir, through you, I request the central government to reduce GST on Kendu leaves from 18% to 5%. Our Public Account Committee in one of their reports have asked the center to provide GST exemption for imported pharmaceutical products used by the hospitals and research organizations. The committee observed that the issue of frequent notifications and then repeated clarification is indicative of lack of clarity and coordination. The committee has recommended that tax research units may ensure that notifications includes examples for clarity and court cases. I request that recommendation of committee may be implemented. Sir, in conclusion, it is vital to prioritize areas where immediate reforms are needed. With these words, I conclude. Thank you, sir. श्री धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 इस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी द्वारा पेश किए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक वस्तु और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले अपीलनीय प्राधिकरण तंत्र अलग अलग केंद्रीय और राज्य मूल्य वर्धित कर वैट अधिनियमों के तहत मौजूद था। हालांकि जीएसटी की शुरुआत के साथ जीएसटी शासन के तहत आने वाली अपीलों से निपटने के लिए एक समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 शुरुआत में जीएसटी के गठन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं के कारण इसके संचालन में देरी हुई। नतीजन अपीलनीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ राहत चाहने वाले करदाताओं के पास सीधे उच्च न्यायालय के संपर्क में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अध्यक्ष जी, जैसे कि विदित है, यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 और 110 में संशोधन करने पर केंद्रित है, ताकि उनमें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित किया जा सके। अध्यक्ष जी, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और परिणामी परिवर्तन भी करता है। अध्यक्ष जी,
प्रस्तावित संशोधन से जीएसटीएटी के कामकाज और समग्र जीएसटी विवाद समाधान तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जीएसटीटी के संचालन के साथ करदाताओं को समर्पित अपीलीय प्राधिकरण तक पहुंचने के लिए एक संधि प्राप्त होगी, जिससे संभावित रूप से विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे बदले में कारोबारी माहौल और सुधार होगी और जीएसटी नियमों के अनुपालन में को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटीटी उच्च न्यायालयों पर बोझा कम करने के लिए मदद करेगा, जिससे उन्हें होने वाली जटिल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अनुमति मिलेगी। जीएसटीटी में अप्रत्यक्ष विशेष ज्ञान वाले कानूनी पेशेवरों को शामिल करने से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होने और जीएसटी कानूनों के लगातार कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में उम्मीद है। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी की सफलता इसके कुशल प्रशासन और मामलों के समय पर निपटान पर निर्भर करेगी। इससे सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण रहेगा। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटीटी के को कार्यान्वित करने के लिए दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से जीएसटी विवाद समाधान तंत्र में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को ही लाभ होगा। हालांकि जीएसटी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कुशल कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो अभी नया ढांचा बन रहा है, कानून बन रहा है, उसके माध्यम से करदाताओं को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जो प्रलंबित केसेस चल रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, उसका प्रावधान इसमें कुछ नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से उनको भी रिलीफ इसके माध्यम से मिलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है, क्योंकि वो आज भी लंबित बहुत समय से बहुत सारे करदाता उच्च न्यायालय में अपना केस लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देशों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2023 जीएसटी शासन के विकास में सकारात्मक विकास का प्रतीक है। हालांकि चिंताओं को दूर करना और नई अपीलीय प्रणाली में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल प्रभावी कार्यवाहन ही के माध्यम से ही जीएसटीटी प्रस्ताव वास्तव में अपनी इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अधिक कुशल संज्ञागत जीएसटी प्रशासन में योगदान दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज पेश किया है। वैसे 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा सपना साकार हुआ था। और उस समय 2017 में अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखें तो सिर्फ 64 लाख था, जो कि आज बढ़कर 1,39 करोड़ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो गए हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल है, समय समय पर वो संशोधन भी करती है, विचार भी करती है। कभी कभी व्यापारियों के बीच में और जीएसटी के बीच में जो विवाद की स्थिति रहती है तो वो न्यायालय में जाना पड़ता है, और जब न्यायालय में जाना पड़ता है तो उसमें समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। और न्यायालय में पहले ही बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं, लगभग 14,000 प्रकरण हाईकोर्ट में इसके लंबित हैं, और उसी को लेकर अपील के लिए ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, और इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सदस्य की पात्रता, आयु आदि के लिए ये बिल लाया गया है। इससे व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही सही, और मोदी सरकार हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती है, ये बिल उसके लिए लाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों राज्यों में 2-2 ट्रिब्यूनल बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है,
लेकिन वो भोपाल में है। मेरा मानना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के इंदौर में है, तो एक ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी बनाई जाए, ये मैं मांग करता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री लव कृष्णा जी। Thank you for allowing me to speak on this, sir. I appreciate the ministry to setting up the appellate tribunal. It's a move in the positive direction, sir. Uh, it is very much required when we need justice. We need to have another set of bench where we can actually go and represent our case. So I appreciate it. Really appreciate the ministry for coming up with this. But there's one issue with this, sir, which is with regards to the age limit that has been prescribed for both the president and the members. And there's a provision in the bill wherein retired judges can actually be inducted. So my request from my party side is this should not be a place where, again, the retired judges will actually come and settle in this, sir. So it should not be a retirement home for them. So I hope ministry and the government will take care of this, sir. So coming to the GST, when I'm asked to speak on this, when I inquired with a lot of MSMEs, what is the issues that they're facing with the GST regime? We have done amazingly well. The GST, whatever we're getting from various states have grown exponentially, and it has been dispersed to the state governments also very well. And it has helped a lot of MSMEs, mostly in the whichever are being moved from offline to online. They've done exceedingly well in the last 6 to 7 years, sir. But there are few issues that needs to be addressed, mainly with respect to the MSMEs that are actually working with the government, sir. Wherein most of the times when I inquired these MSMEs, how you're doing it, they're saying, yes, with the private players, when we're doing transactions with the B2B with the private players, yes, we are fine. Wherein one or two issues are there. But when we're doing the business to business with the governments or PSUs, central governments, state governments, that's where the major problem that most of them are facing, sir. With regards to the first problem they expressed was that they're not able to file the returns. When I inquired why you're not able to file the returns, the bill amount and the GST amount, in most of the cases, the PSUs or central government or state governments, even after they execute the contract, even after they do the work also, still they're not able to get these bill amounts and GST amounts. Because of this, they're not able to file the returns, sir. And because they are not able to file these returns, they're not able to pay the GST on time. So what is happening? On the government is getting the work done, either central government, state government, PSUs, everyone, they're getting the work done, but instead of paying the vendor, whoever has done the work, they're delaying it. Because the bills are being delayed, he is not able to file the returns. Once he doesn't file the return, there is another provision in this wherein the huge, when we delay filing the returns, there's a huge interest of almost 18% that is being laid on these MSMEs, sir. This is the issue that MSMEs has raised with me. This 18% itself, first thing is non-payment by the PSUs. Second is 18% interest that is being asked by this by the GST laid as a penalty on this, which is itself is very high because this has been there when the service sector regime was there. This 18% was there during the service sector was there. At that time, the PLR, where from the banks, what we are getting, what the MSMEs were getting at that time was around 15%, 12% plus 3%. That's around 15%. At that time, you put it around 18%. But now, when you look at the PLR, which the MSMEs are getting from the banks, it's hovering around 10%, which government has done exceedingly well to bring it down. So it's making the MSMEs more competitive across the world. But still, the penalty is at 18%. So I request the ministry, if the penalty can be reduced, because it is not the doing of these MSMEs, it's the doing of the governments which are not paying them. Because of that, delay is happening. Because of that, huge fines are being levied upon them. So if the ministry can look into it, and if there is a provision of decreasing it, sir, last 1 minute, sir. And also, with regards to when you're doing the business-to-business transactions, the main ask from the MSMEs is that we have issues with the cash flows. Why they have issues with the cash flows is they have to pay 18% of GST plus 10% TDS, and you return the 10% TDS after 1 year. So on the day he starts business, 20% or 28% is being paid to the government. So he has to wait for 1 year for this to be realized. So if
this can be looked into. The ministry can look into it and can come up with a solution, sir. And also, last 2 points, sir. There is we are talking about ease of doing business. Prime Minister is very gung-ho about it, sir. But there is a number of slabs that are there, GST slabs that are there, almost to the number of 8 slabs that are there. When you look at countries like Singapore and other countries which are more progressive, there are only 2 slabs. So if ministry can look into it and bring it down, and also the maximum slab amount that is being levied upon is almost to the tune of 18 to 18%. So if that max slab amount can be reduced to 12% or 10%, which most of these progressive countries are doing, that would be great, sir. So if these can be, ministry can be looked into it, sir. And if this can be looked at in a positive way, MSMEs, which are employing lakhs and lakhs of people in this country, which we want them to be very competitive across the world, which we want them to export, and which for whom we have come up with PLI schemes and all those things. If everything has to work and MSMEs has to compete across the world, I think these issues need to be sorted out, sir. I hope a positive reply from the ministry, sir. Thank you very much. माननीय मंत्री जी। Let me thank all the honorable members who participated in the discussion. I appreciate that there are overall understanding of what the GST is trying to achieve, and it is the glitches or it is the difficulties which are being faced by many of those who are users of the GSTN portal which is being raised, and also the issue of the tax rates. I'll try to address each of the concern voiced by the members, the primary ones, that is. I thank Member Nishikant Dubey for having given a comprehensive overall picture of where the GST is today and from where it has reached here. Member from Indore, Sri Lalwani ji, of course, expressed his concern that there is one tribunal which is being announced from Bhopal for Madhya Pradesh. Every state is going to get 1+1, and the second one or maybe will be located in Indore, which is the commercial center, which is of course a decision which is based on the inputs which are given in the GST Council by the state officials as well. I understand his concern on that. There was this point mentioned by Member Sharmishta Sethi. I'm not sure if she's here now, asking for a reduction in the GST rate for Tendu leaves. This topic on the GST rates for Tendu leaves have been discussed, if I remember correct, more than once in the GST Council. And I think since 2017 itself, this has been subject of discussion. In my tenure, twice this has been discussed. And there is no unanimity of view, and therefore we are not able to arrive at a decision which Orissa might like. So the matter on the Kendu leaves lies there. But it is not because the GST Council did not take it up for discussion. It was taken up, but no unanimity has been arrived. Also, Member Sethi also raised this issue of taxation on online gaming with prospective effect, or if there is a need for a clarificatory exercise. The clarification on that levy was issued, sir. 28% is the tax, and as to who it will apply to, on who will the incidents fall, has been clearly explained. But this particular point that the valuation rules, I like to put it on record again, that the valuation rules to exclude winnings is prospective. So I hope there's no confusion on that. The member from Shiv Sena, Dairishil Maneji,
spoke about the cases which are pending in high courts and Supreme Court. And now that we are bringing in a legislation with amendments for setting up of the tribunal for appellate tribunal, GST's appellate tribunal. And this particular amendment, of course, is looking at the age limits so that it will be in alignment with the rest of the tribunals. I'd like to inform the honorable member that the taxpayer is at his will, liberty, to withdraw from the High Court, from the Supreme Court, and go to the tribunal which is getting set up, so that his case can be speeded up now that there's a new bench which is established at the states and the appellate which is in Delhi. So it is well within the right of the taxpayer who can take it up further, withdraw from there and come over to the. Sir, honorable member from Andhra Pradesh has raised quite a few issues on the GST and the fact that there are eight slabs and that the penalty levied on MSMEs and so on. First of all, sir, on rate rationalization, there is a group of ministers which is formed within the GST. It has had a few sittings, but because the chairman of the committee was the chief minister, the former chief minister of Karnataka, and now that there's a change of government in Karnataka, the committee's chairman's name will also have to be re-looked at. The committee is reconstituted and so on. So that work of rate rationalization is a larger exercise which has been undertaken by the GOM on the issues being faced by MSMEs. The GST Council at the state level and the GST per se at the central level also interacts with various MSME groups. They have had quite a few issues with which the council's teams have sat through and also addressed their issues. So this issue of PSUs not paying the MSMEs, and as a result, they themselves will have to pay the tax on an amount which is not received, has been, I think, to a large extent about the central PSUs have been addressed. I personally involved myself in saying the PSUs cannot delay payment beyond 45 days. It was mentioned during one of my budget speech, after which we followed it up with the PSUs. And once when there was a fairly unbelievable number floating around in the public domain about the total amount which is pending from PSUs for MSMEs, I was perturbed. I went back to check it up. This understanding that PSU means central may not always be correct, sir. Yes, there are PSUs, central PSUs, which owe money to the MSME, and all of us ministers have been very keenly observing them that the delay should not be beyond 45 days. And the central PSUs largely now go by that understanding. But however, I don't have an authority to speak about state PSUs. And it is not a secret that state PSUs who owe a large amount to the MSMEs. And the problem therefore remains for the MSMEs, but it is outside of my realm. It is very much the realm of the states, where the same concern for MSME should be understood by the state governments, and they should quickly clear the bills. I would like to inform the member that this budget, which was read out on the 1st February 2023, we made it a point to say that large companies cannot benefit from claiming those fiscal incentives and other incentives which are given to them without paying the dues to the MSMEs, as they would normally show it as an expenditure, that expenditure which is going as payments to the MSME, and as a result, that expenditure should not be taxed, is the common sense understanding. But you have not paid them. And without paying them, if any company shows it as an expenditure, they cannot draw the claims for having spent that money when actually you have not spent it. You have not paid the MSMEs. So we brought that change in this particular budget so that
these advantages which accrue to the larger companies without actually paying the smaller companies should not accrue till actually they make the payment, whichever fiscal year it may be. So we have been fairly sensitive to the needs of the MSMEs. I'm quite happy to hear more about it. And when I was recently in Vijayawada, honorable member met me with a delegation and gave me also a lot of representations. We'll take that on board. So that being my reply to all those honorable members who spoke about it, I'm very grateful, sir, and I seek the House and its cooperation to pass this amendment. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इस विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। That the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 31 अनिंतर कर संग्रह विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the immediate effect of for a limited period of provisions in bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise be taken into consideration. So thank you, sir. I'll briefly highlight the need for a bill of this nature. So Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. What this bill seeks to obtain is this authority from the Parliament to provisionally levy and collect the newly imposed or increased duty of the customs and excise for 75 days. I'll briefly give you the background, sir. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, that which is before us, proposes to replace the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act 1931 with just minor changes, which is technical in nature. So this law is in existence from 1931. We have just made minor changes, and we are here, therefore, not with a new law, but with a mildly amended existing law. The provisions of the bill empowers collection provisionally. I underline the word provisionally. During the period between the introduction and the enactment of the bill, the increased customs or central excise duty, where such duty rate is increased beyond the statutory rate approved by the Parliament, or where such duty is newly imposed. So if you are bringing in something and that which has to be implemented from a particular date, this provisional collection of taxes bill, which exists from 1931, is the one which gets invoked. This bill confines this interim period to 75 days, and where the bill is not enacted within 75 days or is enacted with amendments, the provisionally collected taxes are to be refunded. So I would like to make it very clear, sir, that the amendments to this
or rates increased by the invocation of this particular Provisional Collection of Taxes Bill 1931 is valid only up to 75 days, within which I need to make it sure that it gets approval of the Parliament. If it doesn't get the approval of the Parliament, then the amount collected will have to be refunded. I already said that Article 265 gives us the Constitution of the Constitution, provides that no tax can be levied or collected except by authority of law. So if I don't have a law within 75 days, the amount collected becomes not valid and therefore it has to be repaid. So the provision is required for reasons. Why do we at all then need to collect it temporarily? Why do you want to provisionally collect it and run the risk that if you don't pass the bill, you'll have to pay the refund back? Why do we want to do it? This provision is required, sir, for reasons such as to provide tariff protection to domestic industry on immediate basis. So sometimes you will have to bring it immediately and not wait for the 75 days or not wait for the session to conclude, pass the bill and so on. So you want immediate relief to be given, moderate domestic prices. When the prices are going up, you need to moderate it, avoid speculation in the market, and also for revenue considerations. So in the case of income tax, this is not required, sir. It is only required for this indirect taxes. In the case of income tax, changes are made in the finance bill for the next financial year. So 1st February, I might bring in the budget, I announce it, but it gets effective only from 1st April. So for the next financial year is when changes are made. And therefore, the power to collect tax provisionally is not required for income tax. In the case of GST, all the rate changes are first of all carried out only based on recommendations of the GST Council. So it gets decided in the Council and then it comes here for the central government to pass it as a part of either finance bill or otherwise. So the recommendations of the GST Council and the effective rate of change is also decided by the Council, and then it is synchronized between the center and the states. So that's the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only therefore for these customs and excise duties that we need it. So I appeal to the House that this temporary provision, which gives me the provisional power to collect taxes, and then subject to the House passing the bill, continue with it. Or if it doesn't within the 75 days, I can pay back, helps me to stabilize the prices in the market, helps me to make sure there are no speculation in the market, and above all, when I want to have immediate impact to protect the domestic industry. Thank you, sir. श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपको और मेरे पार्टी को आभार कि आप लोगों ने इस नेशनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल के बोलने के लिए आपने एक अवसर दिया है। और मैं इस बिल के द्वारा 2-3 मुख्य बातें हैं जो है मैं आपके ध्यान में आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। और वो पहली बात तो ये है कि हम लोगों की आज जो अर्थव्यवस्था है, वो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज 7% से ज्यादा तेजी से हम लोगों की अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5वें स्तर पे हैं, तो अगले कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5वें स्तर से हम लोग 3री स्तर पे हम लोग आ जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की ये गारंटी है। और वो गारंटी हम लोग इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर सुधार के ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, आयुष्मान भारत हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, इन सब में हम लोगों ने बड़े बड़े ठोस कदम दिए हैं, प्रभावशाली कदम दिए। और आज जो हम लोग सदन में चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पे और अब प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पे, माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा जो हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग करनी है,
जो हम लोगों को रैशनलाइजेशन करना है, जो हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वो हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। और जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे चली जाएगी। तो ये आप इन दोनों बिल के द्वारा ये आपको समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि ये काम जो है ये डायनामिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसका प्रभाव देखिए, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम लोग कस्टम्स और एक्साइज की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार हम लोग लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा, ये दूसरी मुख्य बात है, जो कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अभी बात हुई कि जहां 44 करोड़ करीब 44 लाख करीब लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस भर रहे थे, अब वो संख्या 1,40 करोड़ लोगों की हो गई, 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है। कलेक्शंस का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1,86,000 लोगों का कलेक्शन होने लग गया है जीएसटी के द्वारा। आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं, वो भी उसमें दोगुना हो गया, जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए। फास्ट टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वो 600 किलोमीटर चलती। ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे बहुत सुधार इकोनॉमी में आ रही है, हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते। और मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही बड़ी दुखद एक अभी छापा के बाद एक घटना निकल के आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्यसभा के सांसद के घर में 350 करोड़ से ज्यादा कैश वहां मिले, जहां हम लोग एक और भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य की ये प्रयास इनका हम लोगों का रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़े, देश में सुधार आए। वैसे ही हमारे विपक्ष की ओर अगर आप देखें तो वो कैश का इनका व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है, और अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं है। और इनका जो लूट है, खासकर झारखंड में इनका जो लूट है, वो निरंतर चलते चले जा रहा है। और जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापामारी चलती चली जा रही है, और वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, जिनमें से अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, और एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको बुलाया गया है 6 बार। ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है। लेकिन दुखद बात है कि इन लोगों का लूट जो है, इनका इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश में जो इन लोगों का कारोबार चल रहा है, उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है, लेकिन वो अभी भी वहां आए नहीं है। ही हैज नॉट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ईडी। तो सभापति महोदय, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स और एक्साइज में भी, जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि अगर हम लोगों को डायनामिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़े, अगर हम लोगों को प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास वो अधिकार होना चाहिए ऑन अ प्रोविजनल बेसिस फॉर अप टू 75 डेज टू एडजस्ट टू डायनामिक कंडीशंस, चाहे डंपिंग हो जाए कहीं, या कहीं बहुत तेजी से भाव हैं वो बढ़ रहे हों, तो उसके लिए राहत हम दे सकें। तो ये जो है, ये पावर्स हम लोगों को सरकार को देने चाहिए, और इस प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के द्वारा ये हम लोग पावर्स जो है सरकार को दे रहे हैं। और इस तरीके से जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, जो अभी भी अवैध अपना कारोबार कर रहे हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगाना चाहिए, उन लोगों को हम लोगों को छापा मार के रोकना चाहिए। आप करेंगे तो झारखंड में बहुत सारे और लोग निकल के आएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापामारी हो, कि जहां कोयले का, भू माफिया का, शराब का, बालू का, इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है, काले करतूत चल रहे हैं, इन पे आप छापामारी करिए। जो अभी कैश में बिजनेस चल रहा है, उसको आप टैक्स के दायरे में लाइए, हम साहब को राहत दिलवाइए, जिसमें कि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर सुविधा मिले, एक विकसित भारत का निर्माण हो, इस प्रकार से जैसे अभी जीएसटी के बिल में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं,
हम लोगों के प्रयास से तो ये होता ही रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों को भी यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि सब अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए, चलिए मिलजुल कर हम लोग एक विकसित भारत बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीबी सत्यवती जी। I stand here to support the bill from YSR Congress Party on Provisional Collection of Taxes Bill 2023. So before I support, I would like to take this opportunity to talk about some of the ongoing issues faced regarding taxation and the collection of taxes and provide some suggestions regarding the same. Honorable Chairperson, Madam, the first point is remarkable surge in centers' tax revenue collection and the need for its strategic allocation. So I would like to highlight that in 2022, the central government has absorbed an extraordinary 303% surge in tax revenue over the past 12 years, escalating from rupees 6.2 lakh crores in financial year 2010 to rupees 25.2 crores in the financial year 2022. And the second point is high tax burden on middle class. So in the current context, the middle class population in our country would welcome a reduction in the taxation burden. So presently, the rich constitute a small proportion and the majority of India's population remains tax exempt, leaving the middle income group with a substantial tax burden and limited returns. Chairperson, Madam, and the third one from our YSR Congress Party, enhancing the Public Provident Fund. So the unchanging interest rate of the Public Provident Fund, PPF, demands immediate attention, having remained at 7.1% since April 2020, falling short of the 7.9% recommended by the Reserve Bank of India, RBI. Madam, another point, expanding the tax base for inclusive growth. So the increase in population has led to a growth in the workforce. However, the income tax base has not seen a corresponding expansion, necessitating attention. While the absolute number of income tax return filers in India has risen, closer examination of the data from the Ministry of Finance in Lok Sabha for financial year 2023 reveals a comparatively low number of individuals who have actually paid income tax, especially when compared to the figures from financial year 2020. And to achieve this inclusive growth, the government should consider reducing tax rates by broadening the tax net. A scenario where a large population files income tax returns and contributes to income tax payments could lead to a more prosperous country and a more even distribution of tax burden among assessees. So this in turn could result in substantial reductions in tax rates, providing individuals with more disposable income for spending and contributing to the accelerated growth of economy. So taking steps to effectively harness this workforce can contribute significantly to the DGP. So in conclusion, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. Jagannath Reddy Garu, as the Honorable Finance Minister expressed her commitment to addressing the challenges faced by the middle class while presenting in the budget 2023-24, significant tax burdens persist among the population. Therefore, I appeal to the ministry to consider implementing the suggestions from our party as I presented today, as these reforms will undoubtedly contribute to the further growth of our economy. Thank you very much, Madam. माननीय मंत्री जी। धन्यवाद मैम। I like to thank both the members who've spoken on the topic. I appreciate Honorable Member Jayant Sinha for having given a complete picture of what we are doing through this provisional collection of taxes bill. And I also appreciate Dr. Satyavati for having given a picture of how we can take this forward. And the suggestions that she has put forth on behalf of her party is certainly something which I'll have the ministry go through. I hope this is not taken as an assurance, but it's certainly something which I'll
value her inputs and take it forward. So with these words as reply to the two honorable members who spoke, I request that the House pass the bill. विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव। माननीय मंत्री जी का प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। अब बढ़ जाइए बाबा, बढ़ जाइए। अब गिर जाइएगा, अब गिर जाइएगा बाबा, बढ़ जाइए। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके पक्ष में ना है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैडम, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 32 नित्यानंद राय। आइटम नंबर 32 श्री नित्यानंद राय जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 66 के प्रंतुक को भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर है के संबंध में लागू किए जाने को निलंबित करती है। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अभी बोलने का मौका देंगे आपको, बैठ जाइए। हाँ, आइटम नंबर 33, 34, 35 को चर्चा में एक साथ लिए जा रहे हैं। आपका भी ये प्रस्ताव है, एक साथ ले लें इनको चर्चा में। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। श्री टी रंगैया। Thank you, Speaker Sir, for allowing me to
share few thoughts on the proposed Bharatiya Nyaya Samhita Bill 2003, Nagarika Suraksha Bill, Bharatiya Saksha Bill. Sir, given that existing criminal laws were historically used to enable India's colonization, the primary step in revitalizing and modernizing our criminal justice system is critical. At the time, these laws were used to terrorize the people and stifle the dissent voices, but they are no longer represent the current dynamics and aspirations of the Indian society. The adoption of the Bharatiya Nyaya Samhita Bill represents a significant shift from the Indian Penal Code IPC 1860 to create a more unified, equitable, responsible legal framework that aligns the current concerns and growing societal standards. The bill is a progressive and cohesive replacement for the outdated Indian Penal Code, harmonizing with modern context and addressing newer challenges. It is especially sensitive to today's serious challenges, the likes of terrorism, mob lynching, and cyber crimes, the areas that have remained underserved by the IPC outmoded provisions. Additionally, expanding the ambit of terrorist activities to the offenses committed against the state and its citizens perpetrated outside of India would provide the government with legal mechanisms. It needs to combat situations like Khalistan vandalism at Indian High Commission in London last year. The strengthening India's defense system, defenses against the activities that jeopardizing its core interests and citizens' well-being, seeking to fulfill the legal loopholes while strengthening the legal system against these rising threats. The bill ensures stays unified, relevant in the faces of changing criminal dynamics. This legislative change is a key and cohesive step towards establishing a judicial system that is adaptable, just, and capable of protecting every citizen's rights and security. Justice delayed is a justice denied, but justice is justice miscarried. Sir, I reminded the words of famous jurist Jomitas Utopian, Ulponian, who emphasized that justice the perpetual will to allocate every citizen individual their due. This legislation heralding new era of legal system stands as a testament of our commitment to uphold justice while embracing necessary reforms. This transformation bills include several vital reforms crucial for modernizing our criminal justice framework. It provisions echo collective desire to ensure fairness, expediency, and safeguarding the individual rights. From the expansion of electoral modes of the in legal proceedings to the emphasis of forensic investigation for severe offenses, the bill resonates with the ethos of the progress. However, as we aim for more equitable, efficient justice system, it is crucial to consider the diverse socio-cultural dynamics across the nation. The government of Andhra Pradesh adjusts for provisions addressing regional nuances. Flexibility in implementations could better accommodate the unique challenges faced by the different states, ensuring effective, equitable application across the diverse landscapes. While acknowledging positive strides made in this bill, it is essential to advocate for measures ensuring compensation and redressal for individuals wrongfully detained or accused. The inclusion of such provisions would safeguard against a potential injustice and reaffirm our commitment to a fair and just legal system. Improved witness protection measures, the provision for audio-video recording of witnesses, testimonies potential enhances witness protection and augment the accuracy of record system statements.
The option of recording witnesses' testimonies by audio, video, electronic means that designated locations introduces modern methods of maintaining accurate legal records. The setting of specific timelines for crucial legal procedures, such as submitting medical reports in the rape cases within 5 days, 7 days, under Clause 184, delivering judgment within 30 to 60 days after completing arguments, and informing victims of investigation progress within 90 days, ensures expeditious justice delivery. The bill expands scope and medical exams for accused of individuals by allowing any police officer to request such examinations. This ensures timely, appropriate medical attention, especially in case of involving sensitive issues like rape. The coexistence of old and new legal frameworks may lead to confusion and inconsistency in legal application. Ambiguity in some clauses, like shifting the burden of proof in specific cases, require further clarification to avoid misinterpretations and the potential misuse. Judges and lawyers need adequate training to effectively implement the new procedures and interpret law accurately. Make the provisions for holistic service to the victims of rape, including counseling, financial assistance, and access to medical care, more effective, and introduce various other measures to protect witness from the intimidation and retaliation, including physical security, witness anonymity programs, and reallocation support. Provide avenues for victims to participate in legal process, advocate the rights and interests. Sir, regarding this bill, Bharatiya Saksha makes some essential changes to original act, successfully fulfills many of the ministry's objectives. Most notably, it widens the ambit of electronic records admissible as evidence and removes certain colonial references from this initial act. Particularly, case dismissal due to lack of evidence. In 2021, government data brought to light alarming statistics, revealing that 7.5 lakh police cases are closed annually in India due to lack of evidence. This concerning trend is observed nationwide and has consistently increased since 2016, when National Crime Record Bureau began documenting such cases under the category of true but insufficient evidence and untraced or no clue in its crime records in India reports. Given the ministry's expressed commitment to achieving the enhanced conviction rate of up to 90% and fostering a citizens-friendly and efficient criminal justice system, the issue of dismissal due to insufficient evidence demands urgent attention and intervention. It is imperative to rectify this challenge. The reports of the Bureau of Police Research and Development indicates widespread vacancies across all ranks, including specialized investigations units like a crime branch and a small pool of forensic investigation and resources over the years. To enhance the effectiveness of police investigations and expedite case resolutions, police stations require additional forensic resources, well-trained personnel, and increased staffing in dedicated investigation wings. The ministry must also confront the long-standing issues of understaffing within the premier intelligence and investigation agencies. The chronic shortage of personnel, CBI, Central Bureau of Investigation, has significantly hampered the agency work. As October 2023, the report of the 2023, there were 42 vacant superintendent of police level positions out of 73 sanctioned posts, marking the highest vacancy rate among all the 17 police organizations. The IB, Intelligence Bureau, closely follows with 32 vacancies of the same SP level. The SP level officers play a crucial role in investigations as they supervise and direct the engage with cases. Studies indicate that high case loads correlate not to just low conviction rates and court delays, but also the substandard evidence collection and analysis. Therefore, to address these staffing gaps and resource shortages is crucial for enhancing the overall efficiency of law enforcement agencies. The
use of the forensic techniques in evidence collection is crucial in building strong cases, especially in serious crimes like homicide, sexual assault, and burglary. Forensic science goes beyond analysis, fingerprints, and such. It actually provides the necessary tool for examining documents, mobile phones, computers, and audio-video footages. However, the challenge is high case load, outdated equipment, a shortage of experts, deficiency in police training, and implementation translate rare issues of forensic analysis, as per the several reports. The scarcity of evidence is a major reason for India's low conviction rates for offenses against human body, including murder, sexual assault, kidnapping, and human trafficking. Even for crimes against women, our national average conviction rate remains 25.3 according to NCRB data. Currently, only 10 to 12 cases are referred to forensic science laboratories. And these labs are already overburdened with pending cases. A study indicates that if cognizable offenses are referred to the forensic science laboratories, the backlog cases would increase eightfold. The Honorable Home Minister recently announced that forensic investigation will be mandatory for all offenses within punishment of over 6 years. There is, however, a lack of resources in this regard. We are lagging behind global standards in adopting modern forensic techniques in criminal investigation. Developed countries have 20 to 50 forensic scientists for 1 lakh people, while India has only one person for every 3 lakh people, with approximately only 5,000 forensic professionals are working across the country. Moreover, the reports claim that many police stations lack access to forensic technology. This highlights the need of the significant improvement adopting the advanced forensic methods to align with international standards. There is a significant deficiency in specialized training. Although police undergo training at the academy covering various subjects such as policing, criminal law, weapons training, media etiquette, and physical training, there is a notable gap when it comes to forensic technology. Research indicates that 1/3 of civil police personnel in India have never received training in a forensic technology. Experts have stressed the importance of having personnel with the expertise in forensic science involved at every step of the criminal investigation. Sir, with these suggestions, we support these bills, sir, 3 bills. Thank you very much, sir. रवि शंकर प्रसाद जी। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करने वाले हैं। ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड के स्थान पे आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट के। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर एम्फेसिस था, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर एम्फेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता कि कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें हैं ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया माननीय सभापति जी, एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था, जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। हाँ? जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद। तो माननीय उपसभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे माननीय सभापति क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना है। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है दंड के लिए, दंड देना है एक कानून की प्रक्रिया, तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ आई है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा? क्यों लगना चाहिए? 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए? ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं।
और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आजादी आई तो जगह जगह जौहर पंचम की मूर्तियां थी, फिर विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी? उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा? ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने? तो जो पूरी सोच है उसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है, और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभु राम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे उठाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि उस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों? आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है उसका भी संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि 1500 अंग्रेजों के समय के कानून, जो पुराने कानून थे, अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जो तीनों पेनल न्याय संहिता है, क्षमा करेंगे पुरानी आदत जाती है, जाते जाते समय लगेगा, न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पहले भी कई कमीशन आए थे, जैसे मालीमत कमीशन था, जैसे वर्मा कमीशन था, प्रोफेसर माधवमेनन कमीशन था, लेकिन ये पहला कानून में बदलाव है जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपी को चिट्ठी लिखी गई, एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल पॉइंट बनाया गया, एकेडमिशियन से बात हुई, जजेस से बात हुई, रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर लोगों से बात हुई, और 158 कंसल्टेशन में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, ये इस बात से बहुत ही स्पष्ट है कि आज जब 1500 कानूनों के निरस्त की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं, तो एक मन में और विचार आ रहा है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी क्षमा करें, कोई बात नहीं, होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, क्षमा आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं 2-3 बार सभापति जी बोला, बहुत क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारे बहुत से ब्रिटिश इंसिग्निया थे भारत की नौसेना में वगैरह में, इसका बदलाव भी कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही हुआ ना, कि महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी उसका जो सिंबल था उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके अदर कुछ पॉइंटेड तथ्यों पे आऊंगा।
पुराने पेनल कोड में 511 प्रावधान थे, सेक्शंस थे, नए में 356 होंगे। 175 सेक्शन बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नए जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में जो उसमें 533 प्रावधान होंगे, जिसमें 160 बदल दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया है। हर मैजेस्टी, हिर मैजेस्टी, द काउंसिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है, वो इस कानून का सार है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट क्या है मेरे विचार में? ये युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। ये युग सूचना का है, सूचना ताकत है। दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज पावर। और आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मॉल्स, मैसेज ऑन डिवाइस आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज का पहाड़ और उसका भार कम होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में लुटते थे। अब आपका पूरा ट्रायल वीडियो इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं उनको जेल से लाना पड़ता है थाने में, कोर्ट में, और रास्ते में क्या क्या होता है आप सुनते ही रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर्च और सीजन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये ना कहें कि पुलिस ने ये किया और ये नहीं किया। तो ये पारदर्शिता को स्थापित करता है। ये इस पूरे नए प्रस्तावित अधिनियम का बहुत बड़ा किंग है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया है और कुछ ही वर्षों में 33,000 साइंस एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। ये एक नया नौकरी का, एम्पावरमेंट का अवसर मिलने वाला है। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि एक बार अपने स्तर से जरूर स्टेट्स की फर्क होनी चाहिए कि उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेंड हैं। एक चिंता का सवाल है। जब सबके पास मोबाइल जरूर है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है, इसके बारे में थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने थोड़ा इसको और दूसरे रूप में देखा है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, एक विषय मैं यहां पर उठाना चाहता हूं, इसमें बहुत चर्चा होती है, राइट ऑफ प्राइवेसी। आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय बहुत ही स्पष्ट हैं, ए क्रिमिनल हैज नो राइट टू प्राइवेसी, ए करप्ट पर्सन हैज नो राइट टू प्राइवेसी। वरना तो पुलिस उनको कभी गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहाँ 350 करोड़ रुपए मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहां जा ही नहीं सकती है, क्योंकि माय राइट टू प्राइवेसी मेरे घर में घुस रहे हैं। इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार बार राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा उनको कानून पढ़ने की जरूरत है। और पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दिस राइट ऑफ प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कंडोन करप्शन, टू कंडोन क्राइम।
तो ये बात, ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि ये विषय रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे अधिनियम की एक और चीज को समझना जरूरी है। चूंकि इंडियन पेनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे। इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है। मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है, इस बात को समझा जाए। ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये सोच बहुत ही अच्छी लगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून हमारी सोच में अंतर है कि महिला, बच्चे, बहुत विस्तार से उसको रखा गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उसको बताएंगे। और जो पहले जो मानव संबंधित ऑफेंस थे, 302 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मर्डर वगैरह डर लेकर के, और बलात्कार, ये सब कहां से कहां तक थे? ये चैप्टर रोमन 6 में थे, चैप्टर रोमन 16 में थे। और 302 था हत्या का पूरा विश्लेषण और वो अपराध। अब ये सीधा ऊपर आ गया है और काफी जो मैंने भाग महिलाओं, बच्चों के बाद इसको बताया जाता है। जो मैंने कहा बलात्कार का प्रावधान वो सब न्याय संहिता के धारा 63 और 64 में है। तो 376 से 63, 64 ये सोच का है, मैं कहना चाहता हूं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। एक बात जो और कही गई है और जो दो प्रावधान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। सर, एक होता है समरी ट्रायल, एक होता है वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल होता है पुराने कानून में 2 साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल चलेगा। अब सिर्फ एक काम किया माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में कि समरी ट्रायल के सजा वाले को 2 से 3 साल कर दिया। तो जब 3 साल तक की सजा होगी उसका समरी ट्रायल होगा। तो इसके कारण क्या हुआ? जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हजारों हजार केसेस पड़े हुए हैं, वो सीधा चले जाएंगे नीचे कोर्ट में, उनका समरी ट्रायल होगा तो पेंडेंसी खत्म होगी। इसे कहते हैं इनोवेटिव सोच। और एक और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि बहस हो गई, जज साहब बैठे हुए, निर्णय आएगा, पहले तारीख पर तारीख है, फिर बहस। अब बहस पर माय लॉर्ड का जब मूड होगा तो निर्णय देंगे। इसमें इस बात का प्रावधान है कि आपको निश्चित समय अवधि पर चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा और 7 दिन में उसको लोड करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको अपेक्षा है तो आप जयपुर में बटन दबा के देखें, मैं पटना से बटन दबा के देखूं कि निर्णय क्या आया। तो ये जो अनावश्यक, बड़े सम्मान से कहता हूं, ये बहुत पीड़ादायक है माननीय अध्यक्ष जी कि बड़े बड़े ट्रायल पेंडिंग है। और मैं माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील 7 साल, 8 साल, 15 साल पेंडिंग है। सिविल भी पेंडिंग, वो भी गलत है, लेकिन और कई बार हम लोग अखबार में सुनते हैं ना, किसी को 20 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई, उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको 10 साल जेल में रह गया। किसी को 20 साल पहले रिहाई किया गया, 22 साल के बाद उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो क्यों होना चाहिए? अगर हम लोकतंत्र हैं तो इसका एक रास्ता निकलना चाहिए। और इस मामले में माननीय गृह मंत्री जरूर इसको कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि एक समस्या है हमारे लोकतंत्र की कि कोर्ट की सुनवाई कैसे होगी, ये माय लॉर्ड्स का काम है, न्यायपालिका का काम है, उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम सलाह दे सकते हैं, तो काम तो उन्हें करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा, जजमेंट लिखना पड़ेगा, समय पर लिखना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या करना है। और एक बात है, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत किया गया है। आपने देखा होगा भारत सरकार बहुत पैसे देती है, कोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उसको बताया है, तो इसको समझना चाहिए। एक बात सभापति जी, अध्यक्ष जी, इसमें एक और बात आई है कि कुछ जो ऐसे नए ऑफेंस पैदा हुए, मोबाइल स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, चेन स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, ये रोज होता है। इस नए प्रस्तावित जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सबों को अलग से ऑफेंस बनाया गया है। और मैं गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि जो चैलेंजेस है इसको आपने सोचा है और इसको अलग से प्रावधान बनाया। सर, आतंकवाद को लेकर के बहुत चर्चा होती है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इस कानून में आतंकवाद का डेफिनेशन भी रखा गया है और बहुत विस्तार से रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार इस सदन में ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है, बार बार इस सदन में क्या क्या बातें, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। मैं उन लोगों को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उसी धारा 19 में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी में 19(2) भी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। और ये हमने नहीं बनाया है, ये तब से है जब धारा 19 का जन्म हुआ था, यानी जब उनकी सरकार थी। और ये बनाने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिल्कुल उस गांधी जी के अनुयायी थे, फिर भी उनको लगा कि भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता ये बहुत आवश्यक है। आज आतंकवाद से खतरा है या नहीं है? आतंकवादी देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं है? इसलिए आतंकवाद को एक अपराध मानने की जरूरत है। और ये वही लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इस सदन में कुछ दिनों पहले, और आपका बहुत अध्यक्ष जी अभिनंदन कि आपने जो पत्र लिखा हम लोग को और विस्तार से बताया, बहुत ही भावुक था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस सदन में जो घटना हुई उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में समस्या है कि नहीं? केरला में समस्या है कि नहीं? अगर विपक्ष के द्वारा, या बंगाल में है कि नहीं? तो क्या अगर इन विपक्ष के विधानसभाओं में कुछ लोग कूद कर करके आग लगाने की कोशिश करें, पाउडर गिराने की कोशिश करें, तो उनको उचित लगेगा क्या? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है, लोकतंत्र संयम से चलता है। तो जो मैं देख रहा हूं उन लोगों की टिप्पणी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मुझे लगा कि उसको रखूं। एक इस पूरे प्रावधान में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था, माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप, उनका क्या कहते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया, अब बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमें ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी। चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। तो सजा हो गई तो आप सजा याफ्ता हैं, तो बाकी उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, बाकी कुछ होगा। उसी प्रकार से अगर कोई विदेश में प्रॉपर्टी अपराध का लेता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत नए नए, हाँ, 0 FIR, मतलब मान लीजिए कोई घटना हो गई आसाम में, आप रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, क्या करें? तो आप अपने क्षेत्र में उसका एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो सिस्टम से वहां चला जाएगा। तो बिल्कुल समाज के जो व्यवहारिक चुनौतियां थी, उसके निराकरण के लिए आपने बहुत ही प्रभावी काम किया है। तो मैं तो पुनः अभिनंदन करना चाहूंगा
अध्यक्ष जी, एक बात, थोड़ा मैं लंबा बोल चुका, मैं अब समाप्त कर रहा हूँ। एक ऐसा विषय था कि बड़ा बड़ा मेरा प्रिय विषय था, इसलिए मैं थोड़ा नहीं, मैंने देखा कि मैं थोड़ा 35 मिनट बोल गया, इसलिए अब लंबा नहीं बोलूंगा। एक बात मुझे और लगती है, इसमें प्रश्न नहीं पूछते, अरे ये मैं मनती नहीं पहले है, मुझे पूरा तो बोले दीजिए। ये मनती नहीं है। आ रहा है, नया ये कानून आ रहा है, इसमें आपका रोजगार घटेगा या बढ़ेगा? इस पर आपसे हम बाहर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, इस हाउस के कई मेंबरान का है। ठीक है, बैठ के बात करेंगे। सभापति जी, एक और बात मुझे कहनी थी। एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इसमें है, कम्युनिटी सर्विस बाय वे ऑफ पनिशमेंट। कि आपने कोई अपराध किया, पेटी ऑफेंस किया, तो जाइए थोड़ा सा समाज सेवा आप करिए, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और इससे बहुत लोगों को सुधारने में अच्छा अवसर मिलेगा। और इसमें डिफेमेशन भी कम्युनिटी सर्विस में आता है। तो उस साइड के कुछ प्रमुख मेंबरान जो हैं, जो बार बार कई बातें कहते हैं, तो शायद वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो कुछ मानसिक सुधार होगा। मैंने ठीक बोला ना? हाँ सभापति जी, मैं बहुत समर्थन करता हूं इस बिल का। ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अभिनंदन माननीय गृह मंत्री जी आपका, माननीय प्रधानमंत्री। प्रणाम। श्री गजानन कीर्तिकार जी। Sabhapati ji, I am grateful to you for giving me that opportunity. At the outset, I express my wholehearted support on behalf of my Shiva Sena party for this, in English they call it Citizen Security Second Amendment. It has been priority to curb day by day increasing crimes all over India. The crime mongers are not afraid of police action or law courts, since they know well that they can be punished soon for their crimes to unlawful activities. All over India, 806 districts have been formed in 28 states and 8 union territories. To deal crime and civil cases, 672 district courts and 25 higher courts have been established and working effectively. Adhyaksha ji, though the total sanctioned strength of judges in the country is 1,443, only 785 judges have been appointed. Thus, there are 658 posts of judges lying vacant. This has resulted in large number of pending cases, say approximately 5 lakhs and plus, all over the India. The total number of cases pending for more than 30 years is 1,69,000 and 4.3 crores in high courts throughout India. Considering large number of pending cases in the court, the top priority should be given to fill up the vacancies of judges. Not only this, but it is also necessary to increase the number of courts and judges. This only can have deterrent of effect on the crime and in the court. The citizens who are waiting justice in their year-long cases will be happy to get final verdict in the court with reasonable time. The Bharatiya Nagari Suraksha Second Sahita 2023 now includes a new section 532 as part of our commitment to creating a digital India. As per the same trial and proceeding under this code may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of auto-video electronic
means FIR plays a vital role in initiating criminal proceeding and taking the guilt party. Despite multiple attempts to streamline the process, a more hurdle still persists in the form of delay in lodging FIR. The Code of Criminal Procedure CRPC Section 154 is set to undergo an important modification through the BNSS 2. The modification would add Section 173, which states that FIR for cognizable offense can be filed through electronic means, irrespective of the area where the offense occurred. And also, this is differed from the process of uploading FIR online by police, which pertain to making a traditionally filed FIR available in digital form. Under this section, the police officer is mandated to electronically record the information and requiring the informant's signature with three days. BSSN 2 will mandate for the provision of a promptly deliver free of cost copy of the recorded information to the informant or the victim. That is clause 173/2. This approach enables citizens to report crimes or provides informative via electronic means rather than resorting to in-person visit to police station, which might not be feasible due to security reason or other issue. Additionally, this may be in reducing the hesitancy shown by police officer to lodge an FIR because of its highly transparent nature. Now the bill proposed use to digital technology and in eliminating human errors or mischief and reduce the risk of corruption within the police force. This collective efforts aims to modernize and streamline the FIR registration. With this, I conclude, sir. I really express my thanks that at this stage it is very much necessary that we are completing, we are at the threshold of 75 years of our India. So it was very much necessary. And I express my thanks to Amit Shah ji. Thank you. श्री बी मेहताब जी। So you had asked a very pertinent question, how much time have flown after the IPC, CRPC and Indian Evidence Act came into existence. I was just making a calculation. The IPC is 163 years old. And the Indian Evidence Act is 130 years old. And if we calculate 1972 as the promulgation of CRPC, though it was there earlier, so it is already 51 years old. But all these three acts, which is going to be repealed today, are the acts of 19th century and 20th century. We are in 21st century. So I would say 4 months ago, after the first introduction of
3 new pieces of legislation to overhaul the criminal justice system. The government, Honorable Minister for Home Affairs, placed it before us and revised it last week. The new criminal code makes some crucial changes. The bills for the first time bring terrorism, corruption, and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. There were special laws earlier, but now it has come into the ordinary criminal law. These aspects were reserved for stringent special legislation since they upend the general protection by reversing the burden of proof on the accused, as per French jurisprudence, to restrict bail. At the time of introduction, the government had told us that 3 provisions of IPC, that is sedition, criminalization of homosexuality, and adultery, been repealed. Fine print shows Rajdroha been changed to Deshdroha. The narrative has been doing the rounds for quite some time that the Indian criminal justice system is not delivering. Victims of crime are often helpless. The cases are dragging endlessly and courts are getting choked. These are the 4 major issues which actually were perturbing us for quite some time. All this is being caused, it is said, because of colonial laws that somehow do not fit with Indian traditions, Indian customs. The magnificent edifice of the democratic structure today in India rests on the rule of law. As it is always said, as the civilization progressed, the society formed a ruler or created a Raja. But Raja has to perform his duty through law. It is not actually the Raja who protects the subjects. It is the law which protects the subject. That is the reason why we look up to our constitution with great hope and admiration. Because it is not the people who are prime ministers or chief justices. They don't give us justice. It is the law which protects every citizen of this country. It may be said the state does not protect the citizens. It is the law that protects the citizens. The law is supreme. The 3 bills that are before us today is replacing laws of 19th and 20th century. The question is whether they reflect current norms, of criminal jurisprudence. Numerous facets of Indian criminal justice system predate its independence from the British. The IPC was modeled after the Irish Penal Code made by English rulers that came into effect in 1860, though the commission was formed in 1838 and took 20 years to frame the provisions of the Penal Code, and subsequently it got implemented in Ireland, but subsequently in India it got implemented in 1860. First enacted in 1861 and revised in 1973, the CRPC establishes rules for criminal proceedings. In 1872, the Indian Evidence Act, which was modeled as per the British jurisprudence, was passed. Since 1872, this has not undergone any significant changes, and now it is going to be changed with the approval of this House. Invariably, there have been some talk in media and also outside that how can we pronounce these Hindi versions of the law, Bharatiya Nyaya Sanghita. As Indians are very innovative, they have already found a way out. Instead of saying Bharatiya Nyaya Sanghita, lawyers are also saying BNS. So in that respect, that is not an issue
in some quarters where they have a tendency not to utter Hindi names or Indian names. BNS is going to be primarily a primary legislation governing criminal offenses. This bill preserves several sections of IPC. Additional changes include the implementation of new laws targeting organized crime and terrorism. Strengthening of punishment for certain existing offenses is made and introduces community service as a form of punishment for some minor offenses. Importantly, excluded from consideration are specific violations under IPC that have been invalidated or modified by judicial rulings. These include acts of adultery and same-sex intercourse and stipulated in section 377. BNS will have 365 sections instead of 511 sections. 175 sections have been changed, 8 new sections been added, and 27 sections been repealed. Now, I would come to 3 or 4 specific sections of BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. Now, IPC section 124A, that is sedition. Words spoken or written or by signs attempt to infuse hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, unquote, be punished. That is the sum total as sedition has been described. And large number of freedom fighters, including my parents, were all imprisoned because of this section and went behind bars for months and years together. But section 150 of the BNS 2023 says, and I quote, or by electronic communication or by use of financial means excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India be punished. Instead of government, as I said earlier, established by law, the new section says endangers the sovereignty, unity and integrity of India. This is a very welcome step. But I find still some loopholes which need to be plugged. Instead of making incitement to violence or disruption to public order a condition precedent to invoke the charges, the proposed section 150 continues to criminalize any act that excites or attempts to excite secessionist activities or encourages feelings of separatist activities. Furthermore, penalizes a person who indulges in or commits any such act, thereby casting with the law enforcement agencies a greater discretion to decide what can be brought within the fold of an act endangering some sovereignty, unity, and integrity of India for slapping the charges. This discrimination needs to be, I believe, this can be looked into, and it gives a very wide spectrum of discretion to the enforcing agencies. Thirdly, the term separatist activities can be interpreted in several ways and can be used as a political tool to curb opposition parties who organize protests against any of the policies tabled by the government. Then 153B of IPC have been recast as clause 195 of BNS, with an addition where 195(1) subclause D criminalizes the making or publication of false and misleading information jeopardizing the sovereignty, unity, and integrity or security of India. The phrasing of clause 195(1)D raises 3 potential causes for concern. False and misleading and jeopardizing, these are 2 words, renders the clause very vague.
there is need of clarity. It leads to multiple interpretation. Similarly, the word jeopardizes can cover a wide, unforeseeable range of consequences. Why leave all this in the hands of discretionary decision makers? It should be noted that criminal law does indeed deal with the matter of determining what constitutes false information. It also does in other situations, such as making a false statement under oath or providing fraudulent evidence. But in this clause, due to subjective nature of determining truth or falsehood, despite the need to control the mass dissemination of misleading information, will become very challenging. Another issue which has been incorporated in BS is organized crime. Clause 109 and 1010 been introduced effectively to deal with organized crime. Clause 109 borrows heavily from the existing state legislations in organized crime, especially from Gujarat and from Maharashtra. That is also necessary. Clause 110 creates a separate category of petty organized crime from organized crime for the first time. In IPC section 120A deals with criminal conspiracy where two or more persons agree to commit a crime. Two things, gang criminality and racketeering have not been defined. So also anchor points. There is a word in the bill, anchor points. I fail to understand what it meant. There is no distinction between the commission of an offense and its attempt. So there is, it has to be, I think, needs to be looked into. Then concept of community service is not there in IPC. This is a welcome step, but BNS does not define what community service will entail and how it will be administered. On mob lynching, clause 101, subclause 2 and 115, subclause 4 introduces new provision against heinous crime of mob lynching without specifically using the term. Section 352 IPC is applied for murder. It says whoever commits murder shall be punished with death. The BNS, there is a phrase, personal belief or any other ground which is without any definitional clarity. Therefore, it is quite dangerous. On abortion, section 132 of IPC is there. Unfortunately, except for moving the provisions from section 312 and up to 316 to clause 86 to 90, no significant changes have been made. BNS does not even bother to change arcane terms such as quick with child with an appropriate word. There are certain other words also relating to a cart, relating to a horse. All these things have been there that needs to be removed because those were the idea of 19th century and most of them have crept in here. It repeats language that was in the 19th century. Medical and ethical understanding of pregnancy and abortion has undergone tremendous change in today's world that could have been brought into our in this BNS. Now coming to BNSS, this will replace CRPC 1973, and the major issue is here. Audio-video recording is now made in line with the increasing use of technology and by ensuring greater accountability and transparency in police investigation. Courts have time and again emphasized the need for utilization of audio-video recording. Clause 105 in BNNS is new, which aims to record search and seizure through audio-video electronic means, preferably cell phone. Instead of section 157 of CRPC, it is clause 176 relating to procedure for investigation. Proviso is added in the BNSS, which was absent in CRPC. However, section 161
and Section 154 been retained in Clause 180 and Clause 173 of BNSS. Subclause 3 mandates for videography of the process of forensic evidence on mobile phone or any other electronic device, which is a safeguard against manipulation and irregularities. This is crucial safeguard to prevent torture and coercion of the accused during questioning in custody. But a significant drawback is that this is not mandatory requirement. It is certain whether subsequent recovery evidence need to be recorded audio video wise is not mentioned. There is no mention of audio video recording during investigation like spot inspection. Instead of Section 164 of CRPC, under 183 of BNSS, recording of confessions and statements before a magistrate is crucial safeguard to preserve the rights of witness. Confession be recorded in the presence of a lawyer, which is all important safeguard against false confession. But this should have been made mandatory. The provision under Section 321 of CRPC has a gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw from the prosecution of a case with the consent of the court without giving the victim a chance to be heard. But this is addressed in Clause 360, allowing that the victim must be heard before such withdrawal is allowed. This is a significant step. The right to information for the victim has been expanded in BNSS. So in that respect, I believe BNSS has expanded the scope in protecting the victim in a very great way. One issue is relating to handcuffing. It falls short of well-settled constitutional threshold established to protect a person's right to dignity under Article 21. Only thing has come, economic offenders are now being exempted from handcuffing. Clause 398 is an entirely new addition, which provides every state government shall prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensuring protection of the witness. This is a welcome step, no doubt, but it merely reiterates the direction under Mahendra Chawla case, nothing more. Clause 173(6), so 173 subclause 3 introduces a mandate for the collection of forensic evidence by the forensic experts in all offenses punishable by imprisonment of 7 or more years. This clause broadens the scope of forensic experts, which could include private experts without any regulatory body to ensure their proficiency or compliance with professional and ethical standards that could lead to problems. As we have institutes now in our country where boys and girls are studying forensic science, I think this scope is going to expand in a very great way. But we need a regulatory body also to look into that. Article 22 of the Constitution requires a person in police custody to be produced before a judicial magistrate within 24 hours. The CRPC provides this. The BNSS retains this provision. There is a phrase, occasion is past. This was not defined, but subsequently after the standing committee gave its report, there has been change in that BNS specifies in petty cases, person be released as soon as possible within 24 hours. But it leaves a lot of things for the enforcing agency to their discretion. A demonstration I have participated. Police catch hold of me
takes me to a certain place and takes me 25 kilometers, 20, 25 kilometers away in a jungle and leaves me there. What can I say? I can only travel by foot and come back and say, yes, I have come back within 24 hours. But that's not the case. It happens. It happens with all political demonstrations. Now come to the last point, sir. Last bill, that is Bharatiya Saksha Bill, BSB. The Indian Evidence Act 1872 provides two kinds of evidence, documentary and oral evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper record. There is a need to reset the justice dispensation system. Appellate courts are overburdened with appeals. Victims waiting for years and under trial prisoners languishing in jail beyond their presumed conviction time. The policing system has not embraced the advancement of 21st century technology that has transformed investigation and criminology in other countries. Indian Evidence Act of 1872, sir, is a relic of the past. And we have discussed this aspect a number of times in this house earlier. The bill exhibits modern modifications, linguistic adjustments for gender, inclusivity and replacement of outdated terms such as insanity with mental illness. In the bill, the definition of documents has been expanded to include electronic or digital records on emails, server, logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidences, and voicemail messages stored on digital devices. The definition of evidence has been expanded to include any information given electronically which will enable the appearance of witnesses, accused, experts, and victims through electronic means. The BSB has incorporated most of the recommendations made by the Standing Committee on Home Affairs. Several drafting errors that were highlighted have been also addressed. Under the Indian Evidence Act, information received from an accused in police custody is admissible if it relates to a fact discovered, whereas similar information is not admissible if it was received from an accused outside police custody. The BSB retains this distinction. In 1960, I'm coming to the point why I'm mentioning it. In 1960, sir, the constitutionality of this provision was challenged on the ground that it creates an unjustifiable discrimination between persons in and outside custody. The Law Commission in 2003 suggested redrafting the provision to ensure that information relating to facts should be relevant, whether the statement was given in or outside police custody. The Law Commission has made several recommendations which have not been incorporated, but overall, the BSP is in tune of time. Relating to, because this is also being discussed outside, I think some members may also be speaking on that aspect. If I give a statement before a police, I may be under duress. And this has been pronounced by the court that it's not admissible. If it is given before a magistrate, one thing has happened that before a lawyer also it can be recorded, as it is happening in some modern countries or some advanced countries. To a certain extent, the accused needs protection, especially from the law enforcing agency. That needs to be. In conclusion, sir, I may say laws introduced during the colonial era were enacted to keep the subjects, praja, as we say, the subjects that are the Indians in a line. Therefore, it is imperative that the outlook must be changed and law and order must be viewed outside the colonial lens.
Since the drafting of new criminal law is in discussion, it is imperative that justice prevails, as drafting criminal law of a nation is not a regular practice. Sir, this reminds me of one thing that we are missing here in this house. It's for your consideration, sir. In the old house of present Samvidhan Sadan, there was a line on top of your chair. Dharma Chakra Pravartanaya. Wheel of righteousness shall prevail. Sanskrit mein Dharma Chakra Pravartanaya. What we do here, what we discuss here, ultimately it is the Dharma Chakra that we are pravartaning. So in that respect, you can find a suitable place. You can find a suitable place because that is something unique of our culture, our civilization, that can be considered. And here, history is in the making today. That new law for our criminal jurisprudence, our Indian criminal jurisprudence is being enacted. That's a great thing that is happening. And I personally thank our Home Minister for taking, and also the Prime Minister, for taking the initiative. Others could have done it, but they couldn't, they didn't. And you have taken that challenge upon yourself, and the government has taken that challenge upon itself. It is our credit that we are witness to this history in making. Thank you, sir. विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है और सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज इन 3 विधेयकों